Yes. So I was saying that what will be today's agenda? That today's agenda will be complete the house property revision, and after that we are going to solve house property questions. Right? So unlike residential status, now in residential status there were certain questions where we didn't require any writing practice as such because it was all about analysis: resident, non-resident, taxable, not taxable. But in house property we'll have to solve certain sums and we'll have to write some working notes and everything. We will solve it together, so don't worry. We are going to solve some 9 to 10 questions approximately, so that we'll get some good hang on the chapter. Chalo, let's continue with this house property. Yesterday we saw the basics of house property, how to compute the house property income. So first of all, we'll always have to start with GAV, that is gross annual value. After that, we'll reduce all the costs which we are incurring. Now, what are the costs? First cost is municipal tax, which is paid during the year. Municipal tax minus karunga, I will get the net annual value. After that, I will reduce two deductions under section 24. Now the question comes, sir, whether remembering section is important. Yes, for this chapter, or maybe for all the heads of incomes, definitely section numbers are important. For chapters like TDS deductions, section numbers are important. Return of income, section numbers are important. Basically for the entire direct tax, section numbers are important, right? Correct. So we are from gross annual value, we are reducing all the costs. The first cost we are reducing, that is municipal tax. After that, we'll get net annual value. After from net annual value, we'll have two deductions under section 24. So 24A talks about standard deduction and 24B talks about interest on borrowed capital. We are going to discuss everything in detail regarding municipal tax, standard deduction, and interest on borrowed capital after 5 minutes. But after that, we saw that how to compute that GAV. For computing the GAV, first of all, you have to identify the actual rent. Okay, what is my actual rent? But that actual rent we will compare with the expected rent. Now the question comes, how do we compute the expected rent? Expected rent compute करने के लिए there are three things. One, MFS. 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 M is municipal value. F is fair rent. Whichever is higher, I will get one figure. I will compare that with S, that is standard rent. Whichever is lower, whatever answer I will get, it will be expected rent. That expected rent I will compare with my actual rent received, right? If I compare this, whichever is higher, I will get the figure of GAV. From this GAV, I will reduce the municipal taxes. Now in GAV, I just yesterday only I told you this entire page is a heart of this chapter. This entire page is extremely important, and whenever you will solve house property questions, you have to first identify my situation, or this question is falling under which situation here. So I have written certain situations. So the first situation says that property let out throughout the previous year. Then in that case, we will use the same formula. What is that formula? Formula is GAV is equal to expected rent and actual rent received, whichever is higher, right? Okay. ओके, ये जो सब कुछ सिचुएशंस है, ये सब सिचुएशंस है, वो सब सिचुएशंस ग्रॉस एनुअल वैल्यू कंप्यूट करने के लिए यूज होते हैं. ग्रॉस एनुअल वैल्यू, राइट? द फर्स्ट सिचुएशन इज दिस. सेकंड सिचुएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन. सबका ध्यान इधर चाहिए बिकॉज इस पे ही लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. वेयर लेट आउट प्रॉपर्टी इज वेकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर. वेयर लेट आउट प्रॉपर्टी इज वेकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, इसका मतलब इन वन फाइनेंशियल ईयर I have let out that property, or maybe you have let out that property to me for 10 months out of 12 months. So basically 10 महीने के लिए you have let out that property to me, and for the rest of the 2 months the property was vacant, which means it was a bhoot bangla. It was a booth bangla. So why I'm saying booth bangla specifically, I will tell you in the fourth point why I'm saying booth bangla. But understand one thing, in situation 2, what is following? In situation 2, you are letting out that property on rent to me for 10 months, and for 2 months the property is vacant. In this situation, what is going to be your GAV? We are identifying that. So I have taken one situation here. I'll just cancel this. कल का है थोड़ा सा. You see, now you have let out the property for 10 months for 10,000 per month, and it is vacant for 2 months. Perfect. Now expected rent is 1,10,000 rupees, and actual rent. Now can I say actual rent is going to be for 10 months?
because you have let out that property for 10 months. That actual rent is going to be 10,000 into 10, which gives you 1 lakh rupees. Perfect. Now, if you use the earlier formula, what was the formula? Expected rent or actual rent, whichever is higher. But in this situation, we will not consider whichever is higher here. Why? Because my property was vacant for part of the year. So what am I telling to the government? I'm telling to the government, see, you have to first understand ki why we were considering expected rent. I told you the logic yesterday that people used to do a lot of jol in the agreement. अग्रीमेंट में कम फिगर लिखते थे एज रेंट एंड उस पर सिर्फ टैक्स पे करते थे एंड दैट इज वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट केम सो एज पर दिस सिचुएशन आई हैव शोन 1 lakh rupees in my agreement, but government is like, no, 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 from this particular house property you should get 1,10,000 rupees, and that is why we will collect tax on 1,10,000 and not 1 lakh rupees. But see, do you agree to this, that my actual rent is lower than expected rent? Okay. Now government feels that this is the jol which is done by me. But I am telling this to the government, this is not the jol which I'm doing. Why? Because my actual rent is lower than the expected rent, not because I want to do jol. Understand one thing. My actual rent is lower than expected rent, not because I want to do jol. That is less than expected rent because I have not considered 2 months rent in this particular actual rent. If I consider my 2 months rent in this, because it was vacant, right? 10 महीने के लिए सिर्फ दिया था, बाकी के 2 महीने कंसिडर किए कि एक्चुअल रेंट के लिए नहीं कंसिडर किए. But can I say, if I consider those 2 months ka rent 10,000, 10,000, can I say my actual rent would have been 1,20,000, where the expected rent is only 1,10,000, right? And this is why my actual rent is lower than the expected rent due to vacancy. My actual rent is lower than the expected rent, not because I'm doing jol, that is because due to vacancy. अगर ये property vacant नहीं होता तो मेरा actual rent will be higher than the expected rent. And that's why we will not use the formula expected rent or actual rent, whichever is higher. If my actual rent is lower than the expected rent due to vacancy, then in that case, I will consider my GAV is equal to actual rent. Did you understand why I did not consider expected rent as 1,10,000 and why I did not consider GAV is 1,10,000? Because my actual rent was less than the expected rent due to vacancy. Now I'll take one more example to make this thing very clear. If I take this example, expected rent is 1,50,000 and my actual rent, that is for 10 months into 10,000, it is going to be 1 lakh. Okay. Now, if I assume that it has been given on rent, the property has been given on rent, can I say my maximum actual rent is going to be 1,20,000? But can I say it is still less than expected rent? So can I say this, that my actual rent here is lower than the expected rent, not only due to vacancy? And that's why in such situations, we will not consider this. We will consider GAV is equal to normal formula apna, expected rent and actual rent, whichever is higher. It is going to be 1.5. If it is due to vacancy, then only consider GAV is equal to actual rent. Otherwise do not consider, otherwise normal formula use करो. I'm going to give you one more example here. So तुम लोग थोड़ा try करो, because ये point ना important है house property में. अभी समझो expected rent है 1,25,000. My actual rent 10,000 into 10 months comes to 1 lakh. Can you tell me in the chat what will be my GAV? In the chat, don't unmute please. Here, understand one thing. Here, the GAV is going to be expected rent of 1,25,000. Now the question comes, why 1,25,000? Understand one thing.
that my actual rent is lower than expected rent, not due to vacancy. Why? Because if I just consider 10,000 for 2 months, if I just consider 10,000 for 2 months, that is 20,000, my actual rent will be 1,20,000 only. That is anyways less than my expected rent. And that's why I will not fall under the second situation. I will not fall under the second situation. ये basic strong होना बहुत important है. Since my actual rent is not less is less than expected rent, not due to vacancy, I will use the normal formula: expected rent or actual rent, whichever is higher. So here 2-3 people went wrong. Did you understand what went wrong? Okay. Okay, so here 1.25 lakhs. One more last question, same ऐसे ही लेते हैं. 1,15,000 and 1 lakh. Same situation लेते हैं. What will be the GAV? Perfect. My GAV is going to be 1 lakh rupees. No, no, no. See, understand. 1,15,000 नहीं आएगा इधर. क्यों? Because अगर मैं 2 महीने के लिए देता तो कितना होता? 1,20,000 होता. So my actual rent is lower than the expected rent due to vacancy. अगर vacancy नहीं होता तो ज्यादा होता actual rent. ओके, जिनको नहीं समझा उनको मैं थोड़ा सा आराम से एंड लेक्चर के एंड में बता दूंगा. डोंट वरी. ओके, ये जो पॉइंट है जिनको नहीं समझा, बेसिक्स है ये. अगर बेसिक्स नहीं स्ट्रांग होगा तो नहीं समझेगा. डोंट वरी. बट बाकी सबको समझा? आई थिंक सबको समझा तो है. परफेक्ट. जिनको नहीं समझा, डोंट वरी, हम लोग करेंगे इस बात. सो ये आएगा 1 लाख रुपीज. ओके, वर्षिनी, आर यू क्लियर? राइट. ओके, परफेक्ट. ठीक है. सो ये अपना प्रॉपर फंडा है. योर आंसर, सी, इन बोथ द केसेस योर आंसर कैन बी इधर 125 और 1 लाख. इट कैनॉट बी 120. In this case also, your answer can be either 1,15,000 or 1 lakh. It cannot be 120. Right? मैं थोड़ा सा इधर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ. I'm taking a lot of time in this, but understand this is a bit important for you to understand. Okay? So ये तेरा एक point है. Okay, is everybody clear? Jasmine, are you clear? Sure? Okay, great. See, where the let out property is vacant for part of the year and owing to vacancy, the actual rent is lower than the expected rent. Owing to vacancy, the actual rent is lower than the expected rent. Then the GAV is equal to actual rent received or receivable. Okay. अभी थर्ड पॉइंट पे आता है. इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. नाउ इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल, you have one property, you have not given that property on rent. So of course the NAV is going to be zero. NAV is going to be zero. Perfect. Now इधर उन्होंने वही बोला है, in that case GAV नहीं, NAV is equal to zero. Okay, मतलब क्या? म्यूनिसिपल टैक्सेस दिए होंगे एग्जाम में. Municipal taxes, fair rent, standard rent. We are not required to consider that because my direct NAV is what? Zero. So don't think in those lines because they will give a lot of information, but we have to pick the information which we want. Perfect, everybody. So this benefit is available only for two self-occupied properties and only to individuals and HUF. This we had discussed ekdam end mein, yesterday in the yesterday's lecture. During the at the end I discussed this point ki for only two self-occupied properties we will get the NAV is equal to zero. But other than two self-occupied properties, मुझे deemed to be let out property मानना पड़ेगा and I will have to pay tax on that. Right? Perfect. Okay. Point 4 आता है. Point 4, property let out part of the year and occupied for part of the year. Then you will get confused. कि सर ये तो point number 2 था. Property is let out for part of the year and occupied for part of the year. Point number 2 भी वही था. Where the property is let out for is vacant and for part of the year. Understand one thing. In point number 2, what was the difference? In point number 2, it was saying for 10 months you have given that property on rent, and for the rest of the 2 months it is what? Bhoot Bangla. It is vacant. Nobody is staying there. In situation 2. In situation 4, what is happening? You have given that property on rent for 10 months. This is common 2 and 4 mein. But for rest of the 2 months, you are occupying that property.
It is not vacant. You are occupying that property. This is situation 4. This is situation 4, and this is the basic difference between situation 2 and situation 4. Just understand, you part ऑफ द ईयर के लिए अगर लेट आउट किया होगा तो वो ठीक है, पर बाकी का पार्ट ऑफ द ईयर का क्या, लेट आउट है या वेकेंट है? अगर सॉरी, वापस, तूने अगर पार्ट ऑफ द ईयर के लिए लेट आउट किया है 10 महीने के लिए, तो बाकी के 2 महीने वेकेंट है. इफ इट इज वेकेंट, सिचुएशन 2. if you are only occupying that property, situation 4. ये फंडा है पॉइंट नंबर 4 का. और ये पॉइंट नंबर 4 में सीधा क्या बोला उन्होंने? कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेंट फॉर द होल ईयर and calculate actual rent received. So can I say this is going to be expected rent is for 12 months and actual rent is going to for 10 months in this case? इधर कुछ भी भेदभाव नहीं करेंगे, इधर सीधा 12 मंथ्स वर्सेस 10 मंथ्स करेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. सीधा का सीधा उठ के 12 वर्सेस 10 करेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं. इधर कुछ भी ऐसा ड्यू टू वेकेंसी और कुछ कुछ भी नहीं करने का, सीधा कंपेयर करने का, विच एवर इज हायर वाला पॉइंट. बेसिकली ये तेरा नॉर्मल जनरल लॉ इधर एप्लीकेबल हो जाएगा. एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर. इज एवरीबडी क्लियर विद दिस? यस शिखर, आई जस्ट टेल यू, बोलता हूं मैं. पक्का एवरीबडी श्योर है? सही है, ओके. उसके बाद we saw this yesterday, deemed to be let out property. So if you have 3 self occupied properties, any 2 self occupied properties can be where the NAV is going to be 0, and the third self occupied property, it is going to be expected rent. The GAV is going to be expected rent. और इसका भी मैंने कल लॉजिक बताया कि expected rent क्यों बनाया, because there is not going to be any actual rent. So expected rent versus actual rent, which is always going to be 0, because this is self-occupied property. So whichever is higher में, it is always going to be what? Expected rent. ये पार्ट सबका क्लियर है कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट? पक्का, ओके, ग्रेट. इसका ना मैं तुम लोग को एक चीज बताता हूँ, इसके स्पेसिफिक, इसके लिए इसका लॉजिक ना, आई हैड स्टार्टेड वन पेज ऑन इंस्टाग्राम, मनी मैटर्स विद अमित करके. इफ यू गो देयर, आई हैड मेड वन वीडियो ऑन दिस कि मैंने क्यों ये स्पेसिफिकली ये क्यों थर्ड प्रॉपर्टी उन्होंने डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी किया. इसका मैंने ना रीजनिंग बताया वीडियो में, राइट? सो वो एक बार जाके देखना, मैं लिंक भेजता हूँ आज. इसका ना तुझे रीजनिंग समझेगा कि मैं एग्जैक्टली क्यों बोल रहा हूँ, ये एग्जैक्टली क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी डीम टू बी लेट आउट क्यों है, तुम लोग को समझ आएगा, डोंट वरी. उसके बाद तुम लोग बोलोगे क्या इधर भी प्रमोशन कर रहा है, तो इधर प्रमोशन नहीं, सच में इधर प्रमोशन नहीं करो, उधर मैंने थोड़ा लॉजिक बताया, तो इसीलिए लॉजिक मुझे लगा कि आई जस्ट टेल दिस टू यू. हाँ मतलब तुम लोग वो भी बोल सकते हो, ठीक है. प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड. प्रॉपर्टी इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड. व्हाट इज दिस? दिस इज फॉर द प्रॉपर्टी, ओके, बिल्डर. दिस इज फॉर द बिल्डर. दिस इज फॉर द बिल्डर. स्टॉक इन ट्रेड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक इन ट्रेड? आई एम सेलिंग दीज पेन्स. दीज पेन्स आर स्टॉक इन ट्रेड फॉर मी. सो ऐसे ही थोड़े बड़े लेवल पे बात करते हैं. पेन बिन क्या छोटा बात कर रहे हैं, हम पूरा प्रॉपर्टी बेचेंगे, राइट? तो प्रॉपर्टी बेचेंगे. सो फॉर मी प्रॉपर्टीज आर स्टॉक इन ट्रेड, राइट? ओके. तो उन्होंने क्या बोला? प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग्स और लैंड्स अपॉर्टुनेंट देयरटू मे बी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है. एंड होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी मे नॉट बी लेट आउट ड्यूरिंग द होल और पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर. इसका मैं छोटा सा तुम लोग को शॉर्ट में बताता हूँ क्या है ये. ये शॉर्ट में बेसिकली ये बोल रहा है कि इफ आई एम अ बिल्डर, आई हैव अ लॉट ऑफ हाउस प्रॉपर्टीज विथ मी, बिकॉज मुझे सेल करने. इफ आई हैव दोस हाउस प्रॉपर्टीज एंड इफ आई एम नॉट सेलिंग दोस हाउस प्रॉपर्टीज फॉर 2 years, अगर मेरे पास हाउस प्रॉपर्टीज है बनाए हुए, बट आई हैव नॉट सोल्ड दोस प्रॉपर्टीज फॉर 2 years, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर 2 साल के बाद भी अगर वो प्रॉपर्टी में बेच नहीं रहा हो ना, सो 2 years के बाद वो प्रॉपर्टी ऐसा माना जाएगा दैट आई हैव गिवन दोस प्रॉपर्टीज ऑन रेंट. For the first 2 years, if I don't sell off those properties, it is okay, no problem. Government will not take any action, will not do anything against me. But if I'm not selling that property beyond 2 years, government will assume that you have given those properties on rent, and on expected rent, I will have to pay tax. So yeah, after 2 years, can I see those properties will become deemed to be let out properties? एब्सोल्युटली. और इसका भी लॉजिक मैं तुम लोग को 1 मिनट में बताता हूँ क्या लॉजिक है. बिकॉज बिल्डर्स क्या करेंगे, बिल्डर्स पूरा प्रॉपर्टीज बना के रखेंगे, बना के रखने के बाद दे विल नॉट सेल फॉर 2 years. इफ दे डोंट सेल, गवर्नमेंट इज सेइंग कि बॉस तूने बिल्डिंग बनाया क्यों? अगर तेरे पास प्रॉपर्टीज है, लोगों को घर चाहिए रहने के लिए, दे नीड अ हाउस टू स्टे.
if you have it, please give it. If you don't give it, we will pay, you will collect taxes from you. तो झक मार के every builder will have to sell off their flats, or they have to give those flats on rent, so that the supply in the market will go up. So जैसे सप्लाई ऊपर जाएगा ना, ऑटोमेटिकली प्राइसेस जो है वो कम होते जाएंगे. बिकॉज तू समझ ना, तीसरा ईयर जब भी चालू होगा, इफ आई एम अ बिल्डर, इफ यू आर अ बिल्डर, तुझे मालूम है कि गवर्नमेंट इज गोइंग टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम यू, देन यू विल से छोड़ने यार बेच देता हूँ, अदरवाइज क्या रेंट पे देता हूँ, फालतू का टैक्स तो नहीं भरना पड़ेगा. सो दैट यू विल ऑटोमेटिकली गिव दोस प्रॉपर्टीज ऑन रेंट. सो ये गवर्नमेंट को चाहिए, एंड दिस इज वाई द पॉइंट नंबर 6 has come. This is the proper logic of this. Now this benefit is available. Now NAV is equal to 0, but NAV कितने साल के लिए? 2 years के लिए. Now 2 years will start from which financial year, which date, वो हम लोग देखते हैं. This benefit is available only for the period up to 2 years from the end of the financial year in which the certificate of completion of construction of the property is obtained from the competent authority. For example, I am the builder. My entire building is ready on 7/7/21. 7/7/21. So 2 years will not start from 7/7/21. 2 years will start from end of the financial year. मतलब जब भी completion certificate मिला, उसका end of the financial year comes to 31/3/2022, और इधर से 2 साल. So can I say it is going to be 31/3/24 तक, मतलब basically financial year 23/24 तक these properties का NAV is going to be 0, but from the next year it is going to be expected rent if I don't give these properties on rent. Everybody crystal clear? कुछ प्रॉब्लम नहीं है? पक्का एकदम? ग्रेट. आगे बढ़ता हूँ 7th पॉइंट पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. प्रॉपर्टी वेयर द पोर्शन इज लेट आउट एंड पोर्शन इज सेल्फ ऑक्यूपाइड. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ओनली वन प्रॉपर्टी. ये प्रॉपर्टी में घुसने के बाद देयर आर 2 पार्ट्स, लेफ्ट हैंड साइड पे 1, राइट हैंड साइड पे 1. तो ये 50-50%. तुम लोग अगर पीजी का कॉन्सेप्ट मालूम होगा, पीजी पेइंग गेस्ट, तो ऐसे नॉर्मली यूजुअली होता है, राइट? तो ऐसा है प्रॉपर्टी वेयर द पोर्शन इज लेट आउट एंड पोर्शन इज सेल्फ ऑक्यूपाइड. मतलब क्या, एक रूम में दैट ओनर इज स्टेइंग, दूसरे रूम में द टेनेंट इज स्टेइंग. इट इज लाइक दैट. सो if this is the situation, government has asked you, okay, एक मिनट, this is self occupied property and this is let out property. Everybody clear till here? No problem है? Okay. So if it जो self occupied property है उसका computation अलग करो and let out property का computation अलग करो, बस 2 computation करना है. If it is related to point number 7 where the portion is let out, portion is self occupied, I have to, or I want to see 2 different computations in your answer. The first computation is going to be for self occupied property and the second computation is going to be for let out property. Logically, just think and tell me, self occupied property में क्या आएगा? Why will I do any computation for self occupied property? Anyways my NAV is going to be 0, right? Then why will I do this computation? Only for one thing. Only for one thing I will do the computation. What is that? NAV 0. Of course, under section 24A, whatever deduction is there, I will not get the 30% deduction, of course, because 0 पे क्या करेगा तू? क्या मिलेगा? 24B में I will get something. 24B is what? 24B is interest on borrowed capital. I can get the deduction of that. Basically, if it is a self-occupied property, max to max, I can have a loss. I cannot have any income if it is a self-occupied property. Can I say this? It can be either 0. अगर लोन होगा ही नहीं, तो it can be either 0. और अगर लोन होगा, it will be negative. It will be loss. Perfect. So this SOP is going to be separate and the next is 50% of LOP. Perfect. इधर तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसका नॉर्मल कंप्यूटेशन हम करेंगे. अभी आगे बढ़ता हूँ. पोर्शन लेट आउट computed separately as let out property. Portion self occupied computed separately as self occupied property. Now, no need to treat the whole property as single property. No need to treat the whole property as single property. You do 2 separate computations. ठीक है. Now, people usually forget this. Municipal value, fair rent, standard rent. Do not consider as it is. Now, where will you consider this now? Municipal value or WOSUP? Will you consider that municipal value in self-occupied property? You will not. You will not. Why? Because my NAV is 0. But you will use that municipal value for let out property. For example, that municipal value is 1 lakh.
Standard rent, F is fair rent. Fair rent is 2 lakhs and standard rent is 1 lakh. समझो? तो मैं सबका क्या करूंगा मानो, मैं सबका 50% करूंगा. For me, while I will compute the let out property, I will have to compute 50% to the extent of let out property, 50% of 2 lakhs to the extent of let out property, and 1 lakh of standard rent to the extent of let out property. People usually forget this, and that's why I have considered this in my notes only. Notes में डाल दिया कि usually forget this. Why? Because such municipal valuation is for the entire property let out as well as self-occupied. Even though we are not using the value which is given for self-occupied property, but still it is there, no? Because 50% to uska hai wo. Perfect. Sahi hai. So we need to bifurcate these amounts between let out property and self-occupied property. So portion of let out property, consider only such proportional amount. 50% or 40% or 30%, as the case may be, and portion of self-occupied property ignore, because the NAV is going to be 0. Awesome. So these were the 7 situations which I want you to remember. Whenever any question comes on house property, first of all, you need to identify I'm falling under which situation. If I understand I'm falling under the second situation, third situation, then only I will understand कि मुझे सोचना कैसे है, GAV के लिए सोचना कैसे. इफ आई एम फॉलोइंग अंडर सेकंड सिचुएशन, देन अच्छा मुझे क्या करना है, आई जस्ट फर्स्ट नीड टू चेक कि वेदर द एक्चुअल रेंट इज लोअर देन एक्सपेक्टेड रेंट ड्यू टू वेकेंसी और नो. सो बेसिकली योर थिंकिंग शुड गो इन दैट वे. दैट्स व्हाई सिचुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल टू आइडेंटिफाई, राइट. तुम लोग को बताऊंगा जब भी सॉल्व करेंगे तभी. परफेक्ट. ये होने के बाद छोटे से पॉइंट्स है अभी. टैक्सेस लेवीड बाय लोकल अथॉरिटीज, बेसिकली जो GAV के बाद माइनस करते थे म्यूनिसिपल टैक्सेस, वो जो म्यूनिसिपल टैक्सेस थे उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. ऑफ कोर्स दैट इज डिडक्टेबल फ्रॉम GAV. परफेक्ट. म्यूनिसिपल टैक्सेस इंक्लूड्स service taxes like fire tax, water tax, etc., levied by the local authority. Sometimes they will give you certain they will give you municipal taxes this, fire taxes this, water taxes this, ऐसा. So अगर उन्होंने म्यूनिसिपल टैक्स, समझो कि फॉर एग्जाम्पल दे हैव नॉट गिवन एनीथिंग अबाउट म्यूनिसिपल टैक्स, मतलब ऐसे लिखा नहीं है म्यूनिसिपल टैक्स, बट दे हैव गिवन फायर टैक्स, वाटर टैक्स. So you have to understand they're talking about what? Municipal tax. So you will get a deduction of that. So you understand, no, अपना municipality क्या क्या collect करता है? You know, fire tax collect करता है, water tax collect करता है. तो that is what municipal tax. ठीक है. सबसे important point, how to compute. Percentage कभी कभी दिया होता है. Percentage of percentage. तो जो percentage होता है ना, percentage कभी भी GAV पे compute मत करना. Always compute that percentage on municipal value which will be given. Usually in the question they give percent, so municipal tax is 10% of municipal value. But if they don't give, if they just write municipal tax is 10%, you will not compute 10% on GAV, you will compute 10% on municipal value. This is the second common mistake of students. Because वो लोग क्या सोचते हैं 10% है, उस किस पे यूज करना है, वो ऊपर क्या अपना GAV है, तो GAV पे यूज करते हैं. ना ना ना, हमेशा म्यूनिसिपल वैल्यू पे यूज करना. ओके. कंडीशंस वेरी इंपॉर्टेंट. कंडीशंस पे पेपर बनेगा तुम लोग का. शुड बी एक्चुअली पेड बाय द असेसी. बेसिकली अक्रूवल बेसिस पे म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा. अक्रूवल बेसिस पे म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा. यू शुड पे. फर्स्ट पॉइंट, इट शुड बी पेड. इट शुड बी पेड बाय द असेसी. एंड सेकंड पॉइंट इज इट शुड बी पेड बाय द असेसी. क्या समझा नहीं? फर्स्ट, इट शुड बी पेड बाय द असेसी, पे होना चाहिए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. सेकंड, इट शुड बी पेड बाय द असेसी, मतलब उसने ही पे करना चाहिए. जिसको डिडक्शन चाहिए ना, उसने ही पे करना चाहिए. सेंटेंसेस सेम है, सिर्फ वॉइस अलग है. अंडरस्टूड? समझा? पक्का ना? ऐसा कभी कभी दे गिव यू दैट म्यूनिसिपल टैक्सेस, अभी फॉर एग्जांपल असेसी ने पे नहीं किया, टेनेंट ने पे किया म्यूनिसिपल टैक्सेस. पे तो हुआ है, अरे पर पे किसने किया? पे तो टेनेंट ने किया ना. So why will I get the deduction? That's why I understand the logic. I am reducing my cost, right? So if I have not spent that amount, why will I get a deduction of that? That's why first point, I should actually pay and I should actually pay. These are the two separate points. And the third point is, okay, it should be paid by the assessee. Remember, unpaid tax paid by the tenant is not allowed as deduction. Basically, मेरा bank account debit होना चाहिए. Third point, it should be related to previous year or preceding previous year. For example, in the previous year, in the current year, I am paying municipal taxes for 5 previous years, 5 past years. Will I get the deduction of all the 5 in the current year? Can you tell me?
Yes, sir. I will get a deduction because in the past 5 years, I have not got the deduction, right? Using the same thing. That person is telling me, Income Tax Act, that you will not get a deduction if you have not paid. So can I say in the past 5 years, I must not have got the deduction? So whenever I'm paying it, I can get the deduction of all the previous years. Clear एकदम basic, sure है. Deduction in the year of actual payment. Of course, जब भी payment होगा तभी deduction मिल जाएगा. Now there is one point that if it is a foreign property and foreign property पे municipal taxes pay किए. Of course वो तो मुंबई या गुजरात के म्यूनिसिपैलिटी पे नहीं देंगे हम, वो तो फॉरेन के म्यूनिसिपैलिटी में देंगे. तो वो भी मेरा कॉस्ट में म्यूनिसिपल टैक्सेस से माइनस कर सकता हूँ क्या फॉरेन प्रॉपर्टी का? आंसर इज बिग यस. व्हाई? बिकॉज इट इज ऑल्सो माई कॉस्ट, राइट? अगर तू मेरा इनकम टैक्स कर रहा है तो कॉस्ट भी मुझे माइनस करने देना. अंडरस्टैंडिंग लॉजिक है कि नहीं? परफेक्ट. सो दिस इज योर पॉइंट नंबर 2, म्यूनिसिपल टैक्सेस. एवरीबडी क्रिस्टल क्लियर विद दिस म्यूनिसिपल टैक्स? पक्का? ओके. सो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स. टैक्स सर पेड टू या बोल. सर बट वो प्रॉपर्टी तो बाहर है ना, तो वो उसको उसका कॉस्ट यहाँ पे क्यों वो कर रहा क्लेम इंडिया में? अरे पर इंडिया से तो कोई इंडियन मतलब गवर्नमेंट नहीं है तेरा ना सर उसको. ओके, इंडियन गवर्नमेंट तेरा इनकम तो टैक्स कर रहा है, तो ये तो अनएथिकल हाँ होगा. इंडियन गवर्नमेंट इज सेइंग तू जितना कमाए उस पर टैक्स लेंगे, पर तू कॉस्ट तुझे नहीं देंगे. यू विल से अरे धंधा कर रहा है तो कॉस्ट तो रहेगा ना. इफ आई एम सर, डूइंग बट अ वो बिजनेस. प्रॉपर्टी का तो यूज नहीं है ना मेरे को अरे इंडिया ठीक में है, कुछ भी. इंडिया, अरे पर इट इज ऑल अबाउट एथिक्स. वो गवर्नमेंट कैसे वो गलत हो जाएगा? गवर्नमेंट को हम बोलेंगे अरे तू कैसा आदमी है यार, तू इनकम पे तो टैक्स ले लेता है पर मुझे कॉस्ट का डिडक्शन नहीं देता है. आई नो इंडियन गवर्नमेंट को कुछ फायदा नहीं है, आई नो इंडियन गवर्नमेंट को कुछ फायदा नहीं है, बट इफ यू आर टैक्सिंग द फॉरेन इनकम, देन यू शुड टैक्स द प्रॉफिट, नॉट द इनकम. हाँ That's why, only because of the ethics. हाँ सर. Got it? So tax paid to foreign local authority. If the property situated in foreign country, tax paid to a foreign local authority shall be allowed as deduction because it is your cost. Tax exceeds GAV. Tax exceeds GAV. Now ये कभी होगा? नेगेटिव एनएवी कभी हो सकता है क्या? नेगेटिव एनएवी हो सकता है. नहीं, एसओपी नहीं, एसओपी में तो जीरो ही होता है. नेगेटिव बोल रहा हूं मैं. नेगेटिव एनएवी कभी होगा मालूम है? where I have some GAV, for example, 1 lakh, and I have paid the municipal taxes for last 30 years in the current year, where my municipal taxes are going to be huge. तो ये जो municipal taxes जब भी मैं GAV से माइनस करूंगा, I will get negative NAV. चलेगा ना? Whenever your cost is more than your income, so in case the municipal tax paid includes tax paid for several past years, and the total amount for tax so paid by the owner exceeds the GAV, then the net annual value can be negative. Okay, refund of tax. Refund of municipal tax paid for the property is not taxable under section 22. अगर in case तुझे refund मिला किसी का, तो वो tax नहीं, वो taxable नहीं होगा. Refund मिला तो. Advance municipal tax paid by the assessee. I am telling this to the government that I am going to pay municipal taxes for the next 20 years. Please give me the deduction in the current year. नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. I will get the deduction only in the current year for the current year's tax, even though I have paid for next 30 years. एकदम क्लियर? पक्का? ओके, अभी मैं 1 मिनट रुकता हूँ और I'll just take the doubts. हाँ, so I was on this point. सब लोग भूल गए ना जो भी सीखा था रेगुलर लेक्चर? माय स्टूडेंट शुड नॉट से दिस. मारे को फटके सबको. सो ठीक है, बट आई थिंक देयर इज अ गैप ऑफ 2-3 months नाउ. 2-3 months. तो डेफिनेटली टैक्स तो ऐसा सब्जेक्ट है कि भूल ही जाते हैं. ओके, चलो, वी विल लेट्स मूव फर्दर. डिडक्शंस फ्रॉम एनुअल वैल्यू. अभी कितना किया, क्या क्या किया, क्या क्या किया, क्या क्या किया? अगेन फर्स्ट GAV देखा, म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस किया. आई विल गेट द फिगर ऑफ NAV. NAV से I will reduce two things: 30% of NAV, that is 24A, and interest on borrowed capital. अभी 30% of NAV में there is no explanation. Absolutely, जो सबको मिलेगा. और मैंने ये भी तुम लोग को बताया कि 30% में क्या क्या इंक्लूड होगा. सब कुछ, सब कुछ, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, कुछ नहीं अलग से मिलने वाला है. यू विल गेट एवरीथिंग. एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन 30%. सो इवन दो दे गिव यू रिपेयर्स separately, maintenance separately, ignore it. There is one question which we are going to solve. Okay,
मैं डायरेक्टली आता हूँ इंटरेस्ट ऑन लोन और बोरोड कैपिटल, फटाफट कवर करते हैं अभी 15 मिनट में. इंटरेस्ट पेबल ऑन अमाउंट बोरोड फॉर द पर्पज ऑफ परचेज, कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, रिपेयरिंग, एक्सटेंशन, रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन ऑन अक्रूवल बेसिस. ओके, इस पे मैं 2 मिनट में आता हूँ. अभी हम लोग पहले बात करते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का. ओके, इसके लिए ना मैंने किधर तो कुछ किया था, हाँ ये इधर देखिए क्या दिख रहा है, टाइमलाइन दिख रहा है कुछ तो. 1/4 लेफ्ट से स्टार्ट करो, 1/4/2021 till 31/3/2022. This is, can I say, financial year 21-22? Yes. So next financial year starts from 1/4/2022 till 31/3/2023. So can I say it is 22-23? Perfect. कुछ problem नहीं है. Now, for example, the construction gets completed on 7/7/22. The construction gets completed on 7/7/2022. So we need to first identify the pre-construction period and post-construction period. First thing हम लोग को सिर्फ इतना ही कंसिडर करना है. ये किसके लिए है प्री कंस्ट्रक्शन पोस्ट कंस्ट्रक्शन? अंडरस्टैंड, आई हैव टेकन अ लोन सम 4 years बैक और 3 years बैक, और वो लोन का मैं इंटरेस्ट जो पे करता हूं ना, वो इंटरेस्ट का पेमेंट, कैन आई से दैट इंटरेस्ट इज अ कॉस्ट फॉर मी. सो सो दैट इंटरेस्ट का डिडक्शन आई विल गेट इट अंडर सेक्शन 24B. ओके, बट इसमें भी उन्होंने 2 बाइफर्केशंस किए. प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट अलग होगा और पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट अलग होगा. नाउ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का मुझे पीरियड पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि व्हाट इज प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, व्हाट इज पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड. देन वी विल सी कि वो पीरियड में कितना इंटरेस्ट है और उस पर क्या ट्रीटमेंट है. प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैसे, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कभी हुआ 7/7/2022. आई एम स्टैंडिंग ऑन 7/7/2022. मैं पीछे देखूंगा, आई विल सी बिहाइंड एंड आई विल सी कि 31 मार्च कभी दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है पीछे. 31 मार्च कौन सा दिख रहा है इधर 7/7/22 के पीछे? 31/3/2022 दिखेगा उसको, राइट. सो 31/3/2022 के पहले का जो पीरियड है ना, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड. Even though the construction is getting completed on 7/7/22, the pre-construction period will not end on 7/7/2022. Pre-construction period will end on the last day of the previous financial year in which the construction is completed. Basically क्या है वो, इंग्लिश बाजू छोड़ दो, इंग्लिश छोड़ो. आई एम सेइंग कि 7/7 को कंप्लीट हुआ, पीछे देखो कौन सा 31 मार्च आता है. जो 31 मार्च है दैट इज द लास्ट डे ऑफ द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड. परफेक्ट. ओके, अभी ऑफ कोर्स प्री कंस्ट्रक्शन इज एंडिंग ऑन 31/3/2022. सो इसके आगे का पार्ट क्या होगा, पोस्ट कंस्ट्रक्शन. डिड यू अंडरस्टैंड हाउ टू कंप्यूट प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड? ओके, पक्का, नो प्रॉब्लम. अभी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का समझो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का टोटल समझो कि 1/4/2021 से चालू किया और टोटल प्री कंस्ट्रक्शन. एक मिनट, मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूं. मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड चालू होता है समझ 1/4/2019 से टिल 31/3/2022. ओके, तो ये जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है, इन दिस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आई हैव पेड द इंटरेस्ट, of 50,000 rupees to the government. And in the post construction period, is my post construction period starting from 7/7/22? Is my post construction period starting from 7/7/22? No, my post construction period is starting from 31/3/22, or maybe for 1/4/2022. Perfect. In the post construction period, in that financial year, मतलब 22-23 में, I have paid the interest of 1 lakh rupees. Can I say ये सब में लोन क्या किसके लिए लोन लिया है? For purchasing the property? Yes. So I should get the interest का deduction? Yes. So will I get how much amount will I get it as a deduction as 24B in the financial year 22-23? ये क्वेश्चन है. अगर 22-23 में अगर मुझे डिडक्शन लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने बोला पहले पोस्ट कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट ले, वो है 1 लाख रुपीज. तो ये 1 लाख रुपीज पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, आई विल गेट इट फुल. बट जो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है दैट इज 50,000. उन्होंने बोला 50,000 का डिडक्शन तो तुझे मिल जाएगा बिकॉज दैट इज योर कॉस्ट, बट आई विल नॉट गेट द 50,000 एंटायरली
इन द पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का फर्स्ट ईयर। उन्होंने बोला दैट 50,000 जो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है, यू विल गेट इट इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स विच मीन 5, it will be distributed between 5 years equally, which means one 50,000 का 1/5 कितना होता है? It comes to 10,000. So 10,000 I will get it in 22-23. Next 10,000 I will get it in 23-24. Next 10,000 I will get it in 24-25. So ऐसे 5 साल. So basically, if I have to ask you what is the interest का deduction will I get in financial year 22-23, how much will I say? 1 lakh तो मिलेगा ही, post construction में कुछ problem नहीं है, plus I will get 10,000, which means 1,10,000. Everybody understood this? इस पे ही प्रॉपर अपना क्वेश्चन आने वाला है, मतलब जो नॉर्मल बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो इस पे ही होते हैं. In the main question, what will they ask you? They will not give you the interest directly. They will say कि इतना इतना लोन है और इतने लोन से तुझे इंटरेस्ट कंप्यूट करना है. तो लोन पे तुझे इंटरेस्ट कंप्यूट करके, इंटरेस्ट का परसेंटेज कंप्यूट करके यू विल गेट द फिगर ऑफ 50,000. बेसिकली इतना ही फर्क होगा, बाकी कुछ नहीं होगा फर्क. They will tell you that what is the date of completion of construction. That is 7/7. They will give you इतना इतना लोन था. तो फर्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 इज identify the pre-construction period, post-construction period. After that, interest computation तो 11th standard से कर रहे तू. So interest computation is not a challenge. Pre-construction period, post-construction period identify करना is a challenge. Right? So pre-construction का जितने साल पहले मैंने इंटरेस्ट पे किया था ना, वो सब accumulate करूंगा मैं. Not for the past year, past 1 year. All the years I will accumulate. I will get the figure of 50,000. So this 50,000 is from 1/4/19 till 31/3/22. So this is 50,000. 50,000 पे upon सीधा 5 करूंगा. I will get the figure of 10,000. 10,000 I will get it in the first year. 10,000 in the second, third, fourth, fifth. Everybody clear है एकदम. Okay. ये अभी नहीं पढ़ा तो भी चलेगा because we have covered everything here. कुछ भी नहीं किया तो भी चलेगा. ये तुम लोग ने तो you just read and you will be able to crack this. Okay. उसके बाद में आगे जाता हूँ. Other important points, very important. Interest on borrowed capital is allowed on accrual basis. अरे is allowed on accrual basis even though I don't make a payment, but still I will get a deduction of interest. But this was exactly opposite. This is exactly opposite to municipal taxes. Municipal taxes तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि you have to first make a payment, then you have to make a payment. ये सब इंटरेस्ट में है ही नहीं. इंटरेस्ट में सीधा बोला है कि ठीक है, तेरा इंटरेस्ट जनरेट भी हुआ, तुझे पेएबल भी होगा ना, तो भी तू डिडक्शन ले ले. Understood? So interest on borrowed capital is allowed on accrual basis. Sometimes in the exam they will give you like this: interest on borrowed capital is this, but it is unpaid. You will say, अरे यार unpaid है, shit. पेड होता तो मैं डिडक्शन लेता. नहीं, अनपेड है तो भी तू डिडक्शन ले सकता है. एंड दे विल डेलिबरेटली गिव इट लाइक दिस, इट इज अनपेड. और दोनों लिखेंगे, म्यूनिसिपल टैक्सेस भी अनपेड है, इंटरेस्ट भी अनपेड है. म्यूनिसिपल टैक्सेस यू विल से हाँ चल निकल, मैं तुझे डिडक्शन नहीं दूंगा. बट फॉर इंटरेस्ट, इवन दो यू हैव नॉट पेड, यू विल स्टिल गेट अ डिडक्शन. ओके, सो दीज आर वेरी स्मॉल पॉइंट्स. ये ऐसे एग्जाम में कभी रियलाइज होता नहीं, बट एक बार करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड इज इंटरेस्ट पेड ऑन फ्रेश लोन विच इज टेकन टू रीपे द ओरिजिनल लोन शैल बी अलाउड एज डिडक्शन. एक लोन पहले ही चल रहा है, उसका इंटरेस्ट का पेमेंट करना है. आई एम नॉट एबल टू पे रीपे द ओरिजिनल लोन, उसके लिए मैंने और एक लोन दिया, वो ओरिजिनल लोन रीपे करने के लिए. थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है. एक हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए आई हैव टेकन अ लोन. ओके, वो लोन रीपे नहीं हो रहा है और वो बैंक चिल्ला रहा है उधर से, पैसा दे पैसा दे. बट आई डोंट हैव दैट मनी. That's why I went to another bank. I took a fresh loan to repay the original loan which was taken to purchase the house property. So मैं इधर कहने से दो इंटरेस्ट पे कर रहा हूं. एक इंटरेस्ट बैंक 1, दूसरा इंटरेस्ट बैंक 2, दोनों का डिडक्शन मिलेगा, दोनों का डिडक्शन मिलेगा. ओके, interest on new loan taken for paying the outstanding interest is on old loan is not deductible. Interest on new loan taken for paying outstanding interest, मतलब अगर मैंने प्रिंसिपल कंपोनेंट पे करने के लिए लोन लिया है, ओके, ओरिजिनल लोन तो था ही,
मैंने जो दूसरा लोन लिया ना, आई टुक दैट लोन टू पे ऑफ द प्रिंसिपल कंपोनेंट, तो मुझे दोनों इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। बट अगर ओरिजिनल लोन लिया है, उसका मैं इंटरेस्ट भी पेमेंट कर रहा हूं, प्रिंसिपल भी कर रहा हूं, बट सिर्फ इंटरेस्ट के रीपेमेंट के लिए मैंने दूसरा लोन लिया है, सिर्फ इंटरेस्ट के रीपेमेंट के लिए, तो वो जो दूसरा लोन लिया है ना, उसके इंटरेस्ट पे मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा। भयंकर। प्रिंसिपल कंपोनेंट के लिए मैंने डिफरेंट लोन लिया, आई विल गेट द डिडक्शन ऑफ द न्यू लोन का इंटरेस्ट ऑल्सो। बट अगर इंटरेस्ट कंपोनेंट के लिए न्यू लोन लिया, तो जो न्यू लोन लिया है उसके इंटरेस्ट का मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा। सी, ओरिजिनल लोन के इंटरेस्ट का तो मिलेगा ही। ओरिजिनल लोन के इंटरेस्ट का बात ही नहीं कर रहे, न्यू लोन का बात कर रहा हूँ, न्यू लोन के इंटरेस्ट। बाप रे, जसमिता इज लाइक क्या क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर। अभी इनको जिनको ये नहीं समझा, अगेन एंड में समझाऊंगा अच्छे से, डायग्राम बिग्राम बना के। बराबर, आई होप एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के पास डायग्राम होगा, वो मैंने निकाल के रखा था, दो, एक कोटक HDFC ऐसे कुछ नहीं। अमाउंट पेड एज ब्रोकरेज और कमीशन फॉर अरेंजमेंट ऑफ द लोन। ओके, अमाउंट पेड एज ब्रोकरेज और कमीशन फॉर अरेंज, वो लोन इतना इतना नहीं यार दोस्त, क्या क्या चल क्या रहा है। वो जो नया लोन है, वो लोन के लिए मैंने कमीशन पे किया, सो मुझे लोन मिलेगा। वो कमीशन विमीशन का मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा, मुझे डिडक्शन सिर्फ इंटरेस्ट का मिलेगा, राइट। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स नहीं मिलेगा। क्या चिंदी आदमी है, म्यूनिसिपल टैक्स पे करने के लिए तूने लोन लिया, तो भी तुझे उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी where the annual value is nil। okay, आगे देखते हैं अभी क्या है। नाउ सबका ध्यान इधर। इफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट, understand that you will get the actual deduction even though the interest amount is 17,799 crore। इतना भी होगा ना तुझे इंटरेस्ट का अमाउंट, तो भी तुझे उसका डिडक्शन मिल जाएगा। इफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट, if the property is let out, whatever will be my interest amount, I will get a deduction of that much amount। क्लियर एकदम। सेकंड इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा तो दे हैव सेड स्टिल वी विल गिव यू द डिडक्शन, स्टिल वी विल गिव यू द डिडक्शन। यू टेल मी, अंडर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इज गवर्नमेंट गेटिंग एनी काइंड ऑफ बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस? NAV is zero ना, so government is not going to get anything। but I'm saying कि अरे यार गवर्नमेंट, I'm not generating income but I will generate income in future, so please give me the deduction for my cost। so government ठीक है, चल बच्चा बिंदास। तो मैं क्या करना लगा, मेरे पास 18 लाख का, आई हैव 18 lakhs का इंटरेस्ट, आई सेड कि नो, आई वांट टू टेक द डिडक्शन ऑफ 18 lakhs from my NAV। I took the deduction of 18 lakhs and my loss is 18 lakhs and I set off that loss against my other incomes। बल्ले बल्ले, मैं तो नाचने लगा, क्या बात है यार, क्या प्रोविजन बना है, एकदम जबरदस्त। बट गवर्नमेंट इज लाइक, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम यू, so I will restrict this interest component, I will not give you your actual interest as deduction। so even though your interest is 18 lakhs, I will restrict it to 2 lakhs, I will restrict it to 2 lakh rupees। but this restriction is applicable only in case of self occupied property। this is not applicable to let out property। ये तुझे एग्जाम के पहले 5 बार, जैसे तुम लोग भगवान के सामने जैसे मांगते हो ना, प्लीज आज अच्छे मार्क्स दे देना, इससे साथ साथ ये भी बोलना कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में ही सिर्फ देयर विल बी अ रेस्ट्रिक्शन, देयर विल नॉट बी एनी रेस्ट्रिक्शन इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी। So will I get a deduction of 18 lakhs if I let out the property? If I let out the property, will I get the deduction of 18 lakhs? मिलेगा ना भाई, एक्चुअल है ना, right? But if I am self occupying that property and I am paying the interest of 18 lakhs, how much amount will I get it as deduction? Only 2 lakhs। I will not get the entire amount, it will be restricted to 2 lakh rupees, right? Okay, अभी अभी उन्होंने वापस टाइम पास करना चालू किया, that you have taken a loan prior to 1499 or after 1499। if you have taken a loan prior to 1499 on or before 1499 for acquisition, purchase, repair, renewal, reconstruction, कुछ भी होगा, it will be restricted to 30,000। then you will say, sir क्या बात कर रहे हो, if you have taken a loan prior to 1499, it will not be applicable for me right now because I am staying in 2022 right now।
बट नो ऐसा नहीं होता ना. हाउस प्रॉपर्टी का लोन कैन बी फॉर 25 years ऑल्सो. सो राइट नाउ इट कैन बी एग्जिस्टिंग, नो. सो डोंट इग्नोर बाय सेइंग कि 99, अगर मैं 99 में अगर मैं प्रोफेशनल एग्जाम देता हो रहूंगा तो मैं तभी सोचता. ऐसा नहीं है, या अभी भी तुझे सोचना पड़ेगा. एंड यू हैव टू कंसिडर दिस. इफ द लोन इज टेकन प्रायर टू 1499, देन इन दैट केस acquisition, purchase, repair, renewal, reconstruction के लिए the limit is only 30,000, not even 2 lakh rupees. नॉट इवन 2 लाख रुपीज अगर लोन इसके पहले होगा तो. करेक्ट है. ओके. जस्ट झलक 1 minute, आई जस्ट कम टू योर डाउट. If I've taken a loan on or after 1499, then in that case, if I've taken a loan for acquisition or purchase or construction, then in that case the limit is 2 lakhs. और अगर repair, renewal, reconstruction होगा, then in that case it is 30,000. Sir, I have taken a loan of something and I'm paying interest of 1,60,000 for acquisition. Acquisition के लिए लोन लिया है मैंने 1,60,000 का. और मैंने रिपेयर के लिए लोन लिया है ना, इस पे जो इंटरेस्ट पे कर दो दैट इज 50,000. एक्विजिशन के लिए जो लोन लिया है उसमें इंटरेस्ट पे कर दो 1,60,000. एंड लोन विच आई हैव टेकन फॉर रिपेयर्स ऑन विच आई पे द इंटरेस्ट ऑफ 50,000. will I get a deduction of 2,10,000 or will I get a deduction of 2 lakhs? So if you see it individually, this is less than 2 lakhs and you can say this is restricted to 30,000. How much deduction will I get? Are you 2 sure 2 lakhs. lakhs? Sure? Any different answer, anyone? 1,90,000. Exactly. I will not get a deduction of 2 lakhs because 50,000 will be restricted to 30,000. 50,000 will be restricted to 30,000. इसके लिए तो 30 मिलने वाला है. इसके लिए 1,60,000 पूरा मिलेगा. So it will be what? 1,90,000. Understood? पक्का. I'll take one more example. Acquisition 1.90. Repairs के लिए इंटरेस्ट पे करता हूँ 20. Here I will get 2 lakhs. It will be restricted to 2 lakhs. Now you will say, if you see individually, this is less than 2 lakhs. If you see individually, this is less than 30,000. But still, for one assessee, for one self-occupied property, you will not get more than 2 lakhs ka deduction. Right? And this 2 lakh rupees, the question comes, this 2 lakh rupees will be for one house property or 2 lakh rupees will be for different. Okay. If I have two self-occupied properties, will I get 2 lakhs and 2 lakhs for both the self-occupied properties, or will I get only 2 lakhs for both the self-occupied properties? Only 2 lakhs. Sorry? Only 2 lakhs. Only 2 lakhs. Okay. Understand, for one assessee, the maximum deduction is 2 lakhs, not for one property. For one assessee, the maximum deduction is 2 lakhs. Okay. और दिस एक पॉइंट है दैट अगर इफ यू हैव परचेज द इफ यू हैव टेकन लोन ऑन और आफ्टर 1499 फॉर एक्विजिशन और परचेज, then the condition is you have to complete the construction within 5 years. If you complete the construction within 5 years, then only you will get this 2 lakh rupees ka deduction. But if you do not complete the construction within 5 years, then the enhanced deduction hai na 2 lakhs ka, you will not get, you will get the basic deduction of 30,000. ठीक है? So no higher deduction of 2 lakhs, only Sir, this will be in the 6th year after the 5 years period. yeah. सर ये कंडीशन को वापस रिपीट करिए ना 5 ईयर कंडीशन, जो तूने कंस्ट्रक्शन चालू किया, कंस्ट्रक्शन करने के बाद विद इन 5 years you will have to complete the construction. If you complete the construction, you will get a deduction of 2 lakhs. If you do not complete the construction, then in that case you will get a deduction of not 2 lakhs, 30,000. Basically, higher deduction of 2 lakhs will not be applicable for you. The basic deduction of 30,000 you will get.
Understood? You want to write this down? Can you click a photo of this? Possible? So थोड़ा आगे cover कर सकते हैं. Because I'm going a bit slow in the theory. हाउस प्रॉपर्टी का एक बहुत अच्छी बात क्या है मालूम है? इफ योर थियोरी इज स्ट्रॉन्ग you'll be able to crack the practicals. If your theory is weak, you're gone. You can't do anything. Cool. We'll move ahead. पक्का. Okay, ये सब उन्होंने इधर दिया है. Cool. Other important points. This limit is not applicable to let out or deemed to be let out property. ये तो डालना ऐसे दिमाग में रोज रात को. इतनी गलतियां होती है, इतनी गलतियां. और ये तो चीज ऐसा है ना कि ये रैंकर भी कर सकता है गलती. मतलब ऐसा नहीं है कि जो प्रैक्टिस कम करता है, ये तो बहुत छोटी गलती है, वो सब लोग करते हैं. सो ये ध्यान देना. दिस लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल टू लेट आउट और डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी. अनपेड परचेज प्राइस इज इक्वल टू कैपिटल बोरोड. ये अभी के लिए इग्नोर करना. Where the buyer enters into an agreement with a seller. Okay, ये भी अभी के लिए इग्नोर करना, बिकॉज मैं बाद में जब भी क्वेश्चन आएगा तभी बताऊंगा. या इतना कुछ इंपॉर्टेंट एसेस नहीं है. आई विल मूव अहेड विद द मेन पॉइंट, ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट. इफ यू रिमेंबर, हम लोग ने कंपेयर किया था एक्सपेक्टेड रेंट एंड ARR. व्हाट इज ARR? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड. Actual rent received. So when I compare my expected rent with actual rent, I compare the actual rent received. इसका मतलब, for example, if the property is let out for 12 months, 10,000 per month. So can I say my actual rent is 1,20,000? But for 2 months, tenant has not given the rent to me. In this case, will I compare my expected rent with 1,20,000 or will I compare my expected rent with 1 lakh? I will compare the expected rent with 1 lakh because it is actual rent received. ARR. So actual rent minus unrealized rent. ऐसे कुछ दिखा था उधर. Unrealized rent. What was that unrealized rent? This is that unrealized rent. So we used to reduce that unrealized rent, right? Treatment of unrealized rent. For example, can I say I'm comparing expected rent and actual rent received? So can I say unrealized rent or unrealized component I'm not considering in the taxation? Right? Okay, so in this year, that unrealized component of 20,000 we did not consider. For example, I'm your tenant and you are the owner. मैं इतना छपरी आदमी हूं that I did not give that amount to you, 20,000 rupees. In the next year, I gave that 20,000 rupees to you. So for you, in the next year, can I say this 20,000 should be your income? Don't you think so? Why do you think this 20,000 will be your income? Because you did not consider 20,000 in the past year. That's why 20,000 should be taxable. Now the question comes, on that 20,000, will you get the deduction of 30%, standard deduction? Logically सोच के बताओ, मैं तुम लोग को एक एक चीज बताऊंगा logically. Will you get a deduction of 30%? If you consider that 20,000 in the past year, तो डिडक्शन लेता क्या 30% का? अगर पास्ट ईयर में कंसिडर करता तो. अगर मैं ये 20,000 लास्ट ईयर कंसिडर करता तो आई वुड हैव टेकन द डिडक्शन. You have your answer now. And that is why in this year also, whenever I will receive, I will take a deduction of 30% because that is my right. Perfect. Great. Okay. अभी देखते हैं. Actual rent received or receivable should not include rent which is not capable of being realized. Of course, जितना realized नहीं हुआ, we are not considering that an actual rent. However, conditions to rule number 4 to be satisfied. In many of the questions, you will see rule number 4 is satisfied. Rule number 4 is satisfied. Conditions to rule number 4 is satisfied. Now, what is this rule number 4? We have to understand this.
If rule number 4 is satisfied, then only you will be able to deduct that unrealized rent from the actual rent. Now, what is rule number 5? We understand. Sorry, rule number 4. We'll understand. Rule number 4 बोल रहा है, first of all, that tenancy is bona fide, which means bogus नहीं होना चाहिए. There has to be the actual tenancy. Second, the defaulting tenant has vacated or steps have been taken to compel him to vacate the property. Defaulting tenant has vacated or steps have been taken to compel him to vacate the property. इसका मतलब क्या? For example, I'm your tenant, you are the owner. First of all, tenancy has to be bona fide. मतलब I'm actually staying in your property. Second, the defaulting tenant मतलब मैं has vacated or steps have been taken to compel me to vacate the property. मतलब तुम लोगों ने कुछ तो ऐसे लेटर लिखना चाहिए, ईमेल लिखना चाहिए, भाई निकल अभी, तू पैसा नहीं दे रहा है. You should take some steps. Point 2. Point 3, the defaulting tenant is not an occupation in any other property of the assessee. Point number 3, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं इधर से निकला और आई एम ऑक्यूपाइंग सम अदर प्रॉपर्टी. इसका लॉजिक में इसके जिनको नहीं मालूम, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम है इसका लॉजिक, बट जिनको नहीं मालूम, आई वांट टू टेल यू दिस लॉजिक बट नॉट राइट नाउ. आई विल टेल यू एट द एंड ऑफ द लेक्चर. बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार. लोग कैसे जोल करते हैं ना, इसका एक लाइव एग्जाम्पल ये पॉइंट में डाला है उन्होंने. Point 3 and point 4, the assessee has taken all the reasonable steps. मतलब you have taken all the reasonable steps to institute legal proceedings against me for recovery. Basically, government wants to see कि whether you have taken any action against me or no for not giving you the money. If yes, if you have taken that action, then that unrealized rent you can reduce. Because हम लोग क्या करते हैं, unrealized rent reduce करने के लिए, deduction करने के लिए allow किया है, then what will you say? Amit, do one thing, don't pay me the amount. You will say you will show it under unrealized rent and you will take cash from me. And to the government you will say and you will go and say the government that you never got that amount from Amit Mahajan. That is why I'm deducting that amount from my actual rent. समझा लॉजिक? समझा कि कैसे तुम लोग करते? That's why इतने सारे उनके कंडीशन है. पर तो भी जिनको नहीं मालूम, जो लॉजिक है प्रॉपर, वो मैं डेफिनेटली बताऊंगा. तो मैं इधर एक मार्क करके रखता हूँ, राइट? तुम लोग को और क्लैरिटी आएगा. परफेक्ट. अभी एक लास्ट पेज बाकी है. Inadmissible deduction. For example, if I have taken an interest from if I have taken a loan from outside India, so can I say I will have to pay interest outside India? So whenever I will pay interest outside India, तभी मुझे TDS काट के पेमेंट करना पड़ेगा. If I do not deduct the TDS and if I do not deposit the TDS with the government, I will not get the interest ka deduction under section 24B. Cool? Is this explanation sufficient to understand the concept? Yes, perfect. Arrears of rent and unrealized rent received. Arrears of rent का मतलब क्या है? Financial year 2021 का बात करेंगे, 1/4/2020 till 31/3/2021. This is the first year. Second year is 21-22. Okay. Now, when the second year started, that is 21-22, I revised my rent. Okay, you are the tenant. Okay, say for example, I'm your tenant, you are the owner. I'm staying at your house, that means let out house, for 2 years, 2021, 21-22. 21-22 just started. In that case, I get a notice, and you have written that the rent, you are going to increase the rent, not from today, but from लास्ट ईयर का जैन. मैं बोला यार ये तो रेट्रोस्पेक्टिव तो अमेंडमेंट होते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव तो ये क्या कर रहा है, रेंट बढ़ा रहा है. सो अर्लियर आई हैड पेड द रेंट ऑफ 10,000 per month to you from Jan, Feb or March. So for example, for 3 months, so can I say 30,000 rupees I had paid for the month of Jan, Feb, March? We are standing in April right now, 1/4/2021. You are saying कि मैंने कभी तुझे 12,000 पे करना पड़ेगा, उसमें से 10,000 तो आई हैव ऑलरेडी पेड. सो कैन आई से यू विल गेट 2,000 एक्स्ट्रा ऑफ एवरी मंथ? ओके. नाउ just tell me one thing, what will be the rent which you will receive for financial year 21-22? बराबर 12,000 into 12, which will be 1,44,000. We know the treatment of this, but the question comes, along with this 1,44,000, you will get 2,000 rupees for Jan, 2,000 rupees for Feb, and 2,000 rupees for March, because you retrospectively increase the rent. So can I say 6,000 भी add हो जाएंगे इसमें?
We know the treatment of this, but what is the treatment of this? Will it be taxable in financial year 2021 or will it be taxable in the financial year 21-22? This is the second question. First, what is the treatment? Second, it will be taxed in which year? And the third point, will I get a deduction of 30%? These three questions will clear your concepts. Will it be taxable in 2021 or 21-22? What do you think? This will be taxable in the year in which I have received the income. Because in 2021, I don't know, right? In 2021, I don't know whether I'm going to receive that income or whether you are going to receive that income or no. So how can you identify that? How can you say that for 2021 it will be taxable? It will be taxable in the year in which you have received that income. Right? So it will be taxable in which year? It will be taxable in financial year 21-22. In the year in which you have received. तो ये तो मैंने सर सीधा नेक्स्ट ईयर का लिया. अज्यूम करते हैं मैंने 3 साल से रेट्रोस्पेक्टिव इंक्रीज किया. पिछले 3 साल से रेट्रोस्पेक्टिव इंक्रीज किया. तो मैं थोड़ी ना पिछले तीसरे साल का इनकम टैक्स रिटर्न अमेंड करूंगा. So I will include that income in the current year only, in the year in which I am receiving the income. So it will be taxable in financial year 21-22. The next question comes, will I get the deduction of 30%? If I am receiving the same amount in financial year 2021, तो मुझे मिलता deduction. So whenever I will receive that income in financial year 21-22, I will get the deduction of 30% on this also. Everybody clear? Sure है? Okay. ठीक है. अरियर्स ऑफ रेंट का हम लोग ने देखा अभी, एंड अनरियलाइज्ड रेंट का भी मैंने तुम लोग को तभी एक्सप्लेन किया था कि इन द ईयर ऑफ रिसीट यू हैव टू पे टैक्स एंड 30% डिडक्शन मिल जाएगा. परफेक्ट. इस पे भी एक क्वेश्चन है, वी आर गोइंग टू डू दिस नाउ. ट्रीटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम को ओन्ड प्रॉपर्टी. ट्रीटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम को ओन्ड प्रॉपर्टी इफ इट इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. आई एम दैट पर्सन, I am the owner and Jasmita is the co-owner. I am the owner and Jasmita is the co-owner, right? So we both have taken a loan. We both have taken a loan from the bank. The question is, who will get the deduction of 2 lakh rupees? Now what is 2 lakhs? याद है क्या? 2 lakh self-occupied का interest on borrowed capital. Now who will get a deduction of 2 lakh rupees? Now the answer is both of us will get the deduction of 2 lakh rupees. This is the benefit and this can be the tax planning. My new reel is going to be on this only. On money matters with Amit. So the new reel is, the main point is what? If I take a loan in my name, I will get a deduction of 2 lakhs. But if I take a loan with Jasmita and Jasmita is my sister, for example, then in that case both of us will get the deduction. 2 lakh मतलब 4 लाख का deduction. Understood? तो ये point है इधर का, right? तो ये दोनों को each co-owner shall be entitled to a deduction of 30,000 or 2 lakhs as the case may be. अगर वो if it is in relation to purchase then 2 lakhs, if it is in relation to repairs then 30,000. Both of us will get. But however, if the co-owner, for example Jasmita, owns another self-occupied property or unoccupied property, the aggregate interest from the co-owned property and other self-occupied property cannot exceed. इसका मतलब क्या कि from my property she is getting a deduction of 2 lakhs, but she has another property somewhere else in Bangalore, for example. Now वो भी एक सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसके लिए भी उसने इंटरेस्ट लेके रखा है, लोन लेके रखा है. Now she is paying 2 interest, one for this property also, second for Bangalore property also. But ultimately she will get the deduction of only 2 lakh rupees because as I told you, what was the mantra? Mantra was 1 assessee 2 lakhs deduction maximum. Perfect. Okay. Then let out property, no need to think because actual basis पे deduction मिलता है let out property पे. करेक्ट है. ओके. अभी लास्ट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 27, deemed ownership. Now if you see the definition of ownership, you are not falling under the definition of ownership, but income tax department is telling you, even though as per the definition you are not falling under the definition of ownership, but we will consider you as the owner of the residential house property. Okay. Point number 1, transfer of house property to spouse for inadequate consideration. मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, आई ट्रांसफर दैट हाउस प्रॉपर्टी टू माय स्पाउस. तो स्पाउस को जो ये बेसिकली क्लबिंग ऑफ इनकम का फंडा है, क्लबिंग ऑफ इनकम का फंडा है. मैं बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा हूं, आई एम फॉलिंग अंडर 30% ब्रैकेट. माय वाइफ इज नॉट अर्निंग एनीथिंग.
एंड आई एम गिविंग दैट प्रॉपर्टी ऑन रेंट, तो जो मुझे रेंट मिलता है उस पर 30% के बेसिस पे टैक्स लगता है। तो एक काम करता हूँ ना, वो जो प्रॉपर्टी है वो मैं इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में फ्री में गिफ्ट देता हूँ, किसको, माई वाइफ, टू माई वाइफ। सो वॉट एवर इनकम शी विल अर्न, कैन आई सी शी विल गेट दैट बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट ऑफ 2,50,000। सो उतना तो टैक्स बच जाएगा। ये ऐसा फंडा है। So if I give it for inadequate consideration, even though she is the owner, but still I will be considered as owner and I'll have to pay tax on that. ठीक है। Point 2, same minor child का है। If you transfer your house property to a minor child, it will be taxable in my hands only. Holder of impartible asset मतलब क्या? For example, there are 3 floors, for example, 3 floors, and उसके ऊपर terrace है। तीन भाई है और एक टेरेस है। अभी ये जो टेरेस है और पूरा का पूरा बिल्डिंग अगर मैंने लेट आउट किया, सो टेरेस भी गया ना, तो टेरेस पे थोड़ी जाके रहेंगे हम 3 लोग, तो टेरेस भी गया एक साथ। सो द क्वेश्चन इज, द प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट, दैट इज नॉट ओनली 3 फ्लोर्स, द टेरेस इज ऑल्सो बीइंग गॉन। नाउ द क्वेश्चन इज, टेरेस का जो रेंट है उसका क्या होगा? हु विल पे टैक्स ऑन दैट? हु विल बी द ओनर फॉर दैट? बेसिकली द पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर टेरेस विल बी कंसिडर्ड एज द ओनर, और उसके हाथ में वो टैक्स लगेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल एसेट। यू कैनॉट इम्पार्ट इट। सो जिसका जितना उसका जितना प्रोपोर्शन है, उसका प्रोपोर्शन किसके हाथ में टैक्स होगा? द पर्सन हु इज टेकिंग केयर ऑफ दैट। इतना ही याद रखना, और कुछ नहीं होगा, याद रखा तो भी चलेगा। मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इफ यू नो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द ओनर ऑफ द रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज, एंड बाकी जो लोग रहते हैं ना, वो लोग के पास शेयर रहता है, शेयर ऑफ दैट कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाउ यू आस्क योर पेरेंट्स, if you are staying in a cooperative society, even though the flat is in your name, but still you have the shares of that cooperative society. So are you the owner of the house property? No, you are the shareholder of the house property. Understanding? So now I'm saying perfect. Now if I'm not the owner of the house property, then if I give this house property on rent, whatever amount I will receive, it will not be taxable in my hands because I'm not the owner. You only said आई एम द शेयर होल्डर। तो सबका अगर पूरे के पूरे सब घर अगर लेट आउट किया, तो किसको टैक्स भरना पड़ेगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी, बिकॉज इट्स द ओनर। बिकॉज एज पर द डेफिनेशन, अगर हाउस प्रॉपर्टी टैक्स करना है तो किसके हाथ में टैक्स होता है? ओनर ना। आई एम नॉट द ओनर, बट स्टिल गवर्नमेंट इज लाइक, इवन दो यू आर नॉट द ओनर, बट स्टिल यू आर कंसिडर्ड एज अ डीम्ड ओनर, एंड आई हैव टू पे टैक्स ऑन दैट। Sort. Okay. Now, TOPA. TOPA is what? Transfer of Property Act. Person in possession of house property under part performance of contract. For example, I have sold that house property. Oh, okay. No, not sold. I have given that house property and rent to you, and the some formalities are yet to get completed. So you are okay. Sorry. I'm sorry. Wapis. I'm going to sell that property to you. I did not sell I sold that property to you, but certain formalities are yet to be completed. बराबर है? इधर तक क्लियर है? So you are not the owner of the property on paper. Okay. Now you have given that property on rent to someone. So can I say you are earning income from rent? Yes. So actually on paper you are not the owner, but still you are getting income. So government is like, even though the part performance is done, even though you are not the owner on paper, but still you will be considered as an owner and you will have to pay tax on that. ये तेरा 0.5 है. Right? 0.6, person having right in property by way of lease for 12 years or more. If you have taken some property on lease for 12 years or more, it will be assumed that you are the owner and you'll have to pay tax on that. Owner only for taxation purpose. हाँ, तुम लोग लेके बैठ नहीं सकते उधर, ओनर ने वापस मांगा तो नहीं, for only for taxation purpose. They have said that you are considered as deemed owner. And basically उनको क्या करना है? हाउस प्रॉपर्टी पे तेरे से टैक्स कलेक्ट करने का, इसके लिए। Understood? Everybody? This was all about house property. जितना डिटेल में कवर कर सकता था, I have covered the entire topic. I hope you are clear with each and every point of house property. We are going to take a short break of 5 minutes and then we will start with the questions of house property. एकदम clear? अच्छे से clear हुआ? माथा एकदम? Good. I will see you in 5 minutes. Okay. So from the question bank, we are going to solve some questions. Illustration 5. Ganesh has a property whose municipal valuation is 2,50,000. Fair rent is something. Standard rent is something. ठीक है. मुझे MFS मिल गया. Okay. So expected rent sort. We can compute the expected rent. दिमाग में clear.
The property was let out for a rent of 20,000 per month. Perfect. I can compute the actual rent also. However, the tenant vacated the property on 31 2022. The unrealized rent was 20,000 and all the conditions prescribed by rule number 4 are satisfied, which means you will be able to reduce 20,000 from the actual rent. Okay. He paid municipal taxes at the rate of 8% of municipal valuation, which means municipal taxes bhi mil gaya. Interest on borrowed capital was 65,000 for the year. Compute income from the house property of Ganesh for assessment in 22-23. Now, if you see, the question is very simple, but how to start, how to read the question, how to approach the question is very important. First of all, to do a house property question, you first have to identify GAV. For computing GAV, what do you need? One, expected rent, and second one is what? Actual rent. Just focus on this. Just focus on this. There is going to be a lot of information which will be there in the question, but you have to ignore everything. You have to go step by step. First, I have to find out this, because अगर ये नहीं होगा तो आगे का question ही नहीं होगा. If you follow this, all your tax questions will be a cakewalk. I'm telling you. Just that the information is so much that we get confused. Then from where to start? The first point is GAV. First point अगर GAV होगा तो first point GAV में आता है expected rent. How do we find the expected rent? MFS. M is municipal valuation 2,50,000. F is fair rent 2 lakhs. Whichever is higher comes to 2,50,000. That amount, or standard rent 2,10,000, whichever is lower. So it comes to 2,10,000. So can I say my my expected rent is going to be 2,10,000? Pakka? Sure, ekdam. Okay, 2,10,000 is going to be my expected rent. Perfect. Now I have to compute the actual rent. Actual rent क्या है? Actual rent is property was let out for a rent of 20,000. However, tenant vacated the property on 31/1/2022. Tenant vacated. Can I say for the rest of the period, like for 2 months, it is vacant? 2 months, right? 31/1/2022. So February, March. So for 10 months it was let out. For 2 months it is vacant. First of all, identify I'm falling under which situation. The second one. Everybody agrees with me that we will fall under the second situation. Why? Because I gave that property on rent, and it was vacant for part of the year. Perfect. Of situation 2. Situation 2 में क्या लिखा है? My actual rent, if my actual rent is lower than the expected rent due to vacancy, then my GAV is going to be actual rent. Okay. But first of all, we will compute the expected rent. So first we'll start solving the sum. अब देखते हैं आगे कैसे solve करना है. ठीक? चलो एक बार लिखते हैं. Okay, क्या पूछा है? Ultimately compute the income from house property of Ganesh for assessment day 2023. Okay, take out your books. We'll start writing like this. Computation. फटाफट लिखो थोड़ा सा. Of income from house property. No shortcuts, huh? In the hands of Ganesh for financial year 21-22. As I told you yesterday, don't waste your time in presentation for the time being. Line marne mein time waste mat karna. In life also and in exam also, right? Okay. In particulars, rupees and rupees. So particulars में first क्या लिखेंगे? Particulars में first लिखेंगे GAV. Sorry, will not write GAV, gross annual value. Abhi, of course, we'll have to write a working note for this. Yes, so working note 1. Now, पीछे नीचे थोड़ा छोड़ देना space. After that, we'll write working note. Working note 1. Computation of GAV.
फर्स्ट आता है एक्सपेक्टेड रेंट, पूरा लिखना तुम लोग. Okay, wait. Sorry. You can write it like this. You can reduce the efforts. First आता है municipal value. MFF is fair rent. C is higher. D is MFS, standard rent. E is expected rent. Higher of ठीक है. म्यूनिसिपल वैल्यू कितना था? 250, 2 lakhs and 2 lakh 10. So higher will be 2 lakh 50. Standard rent is 2 lakh 10. Can I say my expected rent is going to be lower, right? Rent. sorry, higher and lower. Lower, yeah. Lower of C and D, it will be 2 lakh 10. Now expected rent सबको समझा? हाँ, मतलब प्रेजेंटेशन वाइज तुम लोग को जैसे लिखने का है वैसे लिखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं. मैंने ऐसे लिखा, ऐसे नॉट नेसेसरी ऐसे लिखना चाहिए, जैसे दिमाग में आया वैसे लिखो. एक्सपेक्टेड रेंट का आंसर शुड बी 2 lakh 10. दैट्स इट. करेक्ट है? ओके. देन 2 lakh 10. 2 lakh 10 के बाद हम लोगों को क्या लिखना है? एक्चुअल रेंट. इनिशियली एक्चुअल रेंट इज फॉर हाउ मेनी मंथ्स? कितना था एक्चुअल रेंट कितना था? 20,000, राइट? लेट आउट फॉर 20,000 पर मंथ. कैन आई से 10 मंथ्स के लिए दिया था? 10 months, it will be 2 lakhs. But I will also reduce what? Unrealized rent for 1 month. नहीं, for 1 month था ना, एक महीने का unrealized था. Unrealized rent for 1 month. Now if I'm in situation 2, right now my actual rent is lower than expected rent. Will I apply situation 2 or no? आराम से सोच के, कुछ गाई नहीं है, आराम से सोच के. It was vacant for 2 months. I'll show the question. See, so it was vacant for 2 months, right? So if I add 2 months ka rent of 20,000 here, it will be what? It will be 2,20,000. So it will be 2,20,000. So 2,20,000, can I say it is more than expected rent? So which means, can I say my actual rent is lower than the expected rent due to vacancy? Because vacancy nahi hota, to my actual rent would have been higher. And that's why I will not consider 2 lakh 10 as my GAV. I will consider 1 lakh 80 as my GAV.
एंड अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, और एक चीज अभी तुमने रियलाइज किया नहीं किया मालूम नहीं, क्योंकि मेरे साथ तुम लोग सॉल्व कर रहे हो। ये जो भी 20 वी एडेड 40,000 एंड सॉ राइट, सो 2,20,000 कैसे आया, 1,80,000 में 40,000 ऐड किया। कभी कभी ये नहीं समझता कि शुड आई ऐड 40,000 इन 1,80,000 और शुड आई ऐड 40,000 इन 2 lakhs। कभी कभी ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो तुझे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड जो है ना उस पे 40,000 करना है ऐड। छोटा पॉइंट समझा क्या बोल रहा हूं मैं? Are you understanding what I'm trying to tell you? I'm saying that unrealized rent जो है वो माइनस किया 20,000, you got 1,80,000. To check whether you're falling under situation number 2, what did you see? जितने जितने महीने के लिए it was vacant, उतने महीने का रेंट किया 40,000 और उतना तुम लोगों ने ऐड किया। But the question is 40,000 to be added in 1,80,000 या 40,000 to be added in 2 lakhs? ये क्वेश्चन अभी नहीं आया, नहीं आया तो अच्छा है, इट इज राइट, बट ये एग्जाम में आ सकता है। So you have to consider add 40,000 not in 2 lakhs but in 1,80,000. Understood everyone? पक्का ना? Sure ना? झलक समझा? Yes, sir. Okay, great. So ये point याद रखना. So because of which अभी एक point लिखेंगे. Since actual rent received is less than expected rent due to vacancy and hence GAV is equal to actual rent, that is rupees 1,80,000. Okay, so I will take this GAV and I will write it. Okay, should I write it in the inner column or outer column? Where should I write? Inner column लिखते हैं because municipal taxes minus करने वाला है. So we'll write it in the inner column. Perfect. Now I will reduce municipal tax. अभी you will just search for municipal tax, nothing else. Nothing else. सिर्फ municipal tax ढूंढ के कितना है? See, he paid municipal taxes of 8% of municipal valuation. Now, what is municipal valuation? 2,50,000 is my municipal valuation. So 8% on 2,50,000 will be, can somebody tell me? 20,000. 20,000? 20,000. So if I reduce, I'll get the figure of 1,60,000. That will be what? A net annual value. Now just see how am I presenting this. Less deductions, पूरा लिखना deductions under section 24. %30 standard deduction, B, interest on borrowed capital. Now we will have to compute ये क्या है, 1,60,000 है ना, और into 30% comes to 48,000. Even though your maths is strong, don't believe in yourself, in your computation, use your calci, right? So 48,000, 48 बाद में interest on borrowed capital. कुछ है क्या interest on borrowed capital? 65,000. Now before applying this, just identify, will I be able to get the entire amount as deduction? Just wait before writing any interest on borrowed capital. Will I be able to get the deduction of 65,000? It is a let out property, right? So I can get the entire deduction, right? So I will get the entire deduction of 65,000. If I reduce this, I will get the figure of 1,60,000 minus 48,000 minus 65,000. I will get the figure of 47,000. And this is what income from house property. और कुछ दिया है क्या?
47,000. राइट, परफेक्ट, एकदम सही है. दिस इज हाउ यू शुड प्रेजेंट द आंसर. अभी आगे जाते हैं पॉइंट नंबर 6 पे. आ जाओ. सर या सर वहाँ पे अभी वर्किंग नोट में अपने को वो लिखने की ये नहीं है ना रिक्वायरमेंट की, जैसे वैकेंसी थी तो अगर अपन 2 महीने का ऐड करते तो वो एक्चुअल रेंट 240 हो जाता एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा. सी, अगर तुझे और एक्सप्लेन करना तो कर सकता है, कुछ प्रॉब्लम कुछ नहीं. इफ टाइम परमिट्स यू कैन डू इट, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. बट हियर वी हैव जस्ट गिवन देम द crux of it, that right now my actual rent is lower than the expected rent due to vacancy, and that's why GAV is this. If you want to write, you can add one more thing. As per the provisions of Income Tax Act, if the actual rent is lower than the expected rent due to vacancy, then the actual rent will be considered as GAV. We can add one सर वो more point नहीं of भी लिखा तो नहीं भी लिखा तो चल चलता जाएगा है, ना, अगर कुछ से प्रॉब्लम अपन नहीं है, वैकेंसी लिख. कुछ प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, हाँ because usually you don't get that much time to explain each and every provision. But if you write हाँ this much in the provision point, it is okay. This much ठीक मैंने है. जो बोला ना, as per the provisions of Income Tax Act, if the actual rent is lower than the expected rent हाँ due to vacancy, your GAV is equal to actual rent. हाँ It is okay if you write this. But working note लिखना मत भूलना, that is very important. ठीक है. Illustration 6. या अंडर सेक्शन इज ओके, यूएस अंडर सेक्शन लिखा तो भी उतना चलेगा. Purna has one house property at Indira Nagar in Bangalore. She stays with her family in the house. Okay. Purna has one house property at Indira Nagar in Bangalore. She stays with her family in house. मतलब कहने से self occupied है. Yes. The rent of similar property in the neighborhood is 25,000. Municipal valuation is 2,80,000. Municipal taxes paid is 8,000. The house construction began in 2000 April 15 with a loan of 20 lakhs taken from SBI Housing Finance Limited, 9% per annum on 1/4/2015. The construction was completed on 30/11/2017. The accumulated interest up to 31/3/2017 is 3,60,000. On 31/3/2022, Purna paid 2,40,000, which included 1,80,000 as interest. There was no principal repayment prior to this date. Compute Purna's income from house property. Now again, बहुत सारा information दिया है. You are not required to get confused. अभी interest भी दिख रहा है, municipal taxes भी दिख रहा है. You should first focus on what? You should first focus on the first element, that is gross annual value. What is, okay, first of all, whether this is the let out property or self occupied property. Can you identify this? Self-occupied. It is self occupied property. Those, are you understanding? Municipal taxes, falana dhimkana, everything is irrelevant right now. So don't even try to decode कि ये क्यों दिया है. पहले ये आइडेंटिफाई कर कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है या लेट आउट है. तो लेट आउट है ही नहीं, तो कैन आई से सेल्फ ऑक्यूपाइड? सेल्फ ऑक्यूपाइड में द नेट एनुअल वैल्यू इज व्हाट? 0. So my 24A का deduction is going to be 0. So what will I get? Only one deduction of 24B. Now 24B का मुझे अगर deduction चाहिए, then in that case मुझे क्या देखना पड़ेगा? Construction complete कभी हुआ? Construction got completed. Okay, you try to identify from this mess, try to identify what is the date of completion of construction. અહીંયા देख, અહીંયા 30/11/2017. Will my pre-construction period end on 30/11/2017? 1st April 17. ऐसा अगर कुछ भी दिखा ना, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर. जस्ट सिंप्लीफाई द एंटायर थिंग. कैसे सिंप्लीफाई करना है? हम लोग ने जैसे किया वैसे ही. प्री कंस्ट्रक्शन, पोस्ट कंस्ट्रक्शन आइडेंटिफाई कर. अभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कभी हुआ? ऑन 30/11/2017. On 30/11/2017, if I look back on 31/3, which 31/3 will I be able to see? 31/3/2017. Perfect. So I will write 31/3/2017 here. So can I say prior to 31/3/2017, it was pre-construction period, and post
1/4/2017, it is post construction period, right? Okay, we are in which financial year? We have to identify income for which financial year? Financial year 21-22. Okay, perfect, no problem in this. Now प्री कंस्ट्रक्शन अगर मुझे इंटरेस्ट चाहिए तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट मैं सिर्फ लास्ट ईयर का देखूंगा या पूरा अक्यूमुलेट करूंगा? I will accumulate all the interest for the previous years. Okay, my loan I had taken a loan from 1/4/2015. 1/4/2015. So can I say from 1/4/2015 till 31/3/2017, whatever interest I must have paid, it will be considered as pre-construction interest? Can somebody help me in with this, with the amount of interest? So will they, can I say it will be for 2 years, 15-16 and 16-17? Chat में बताओ, what will be the pre-construction interest? I'm not saying deduction कितना मिलेगा, I'm just asking pre-construction interest कितना है? Okay, perfect. My pre-construction, क्या बोल रहे हैं? It's given in the question also after this accumulate. Oh yeah, yeah. Exactly. I was checking कि तुम लोग को दिख रहा है. So pre-construction interest is given as 3,60,000. So here you should not go wrong. Correct. Here you should not go wrong. So 3,60,000 is the pre-construction interest. So pre-construction interest is 3,60,000. Right. So what will I do with this pre-construction interest? Will I get it in financial year 17-18? No, I will get it in 5 equal installments. Right? Upon 5 करूंगा कितना आएगा? 72,000. 72,000 I will get it in financial year 17-18, financial year 18-19, financial year 19-20, financial year 20-21, financial year 22-23. Which is our financial year? 21-22. So can I say I will get the pre-construction interest का deduction of 72,000? तुम लोग को समझ रहे, अगर अपना financial year 22-23 होता तो I would not have got any deduction in the current financial year, and there is a high possibility that institute can focus on this. They will give you everything, you will compute everything, but ultimately you are not required to take anything in the answer because you are in the 6th year. Be careful with this. Institute can focus on this, right? But this is the 5th year, so no problem. 72,000 ka pre-construction. But can I say ye saal ka bhi there is some kind of interest, post-construction interest? Have they given anything regarding that? Pune paid 2,40,000, which included 1,80,000 ka interest. Matlab, can I say 1,80,000 ka post construction interest and 72,000 ka pre construction interest? I will get the figure of something. It will be what, 2,52,000. Okay. This 2,50,000 is what? 2,52,000 is the loss. मुझे कितना deduction मिलेगा? It will be restricted to 2 lakh rupees. Why? Because it is self-occupied. Another mistake you must have committed is 2,52,000. इतना मेहनत किया, काम करते हैं, we'll take a deduction of 2,52,000. Please यार, मेहनत किया है 2,52,000 आंसर लाने का. नहीं, even though you have taken all the मेहनत, but still you will get 2 lakh rupees का deduction only. तो ये तेरा point है. एकदम पक्का है, श्योर है, सबको समझा कैसे करना है, सबको समझा. मेनली ना, पहले ना
just understand in these sessions, just understand how am I starting the questions or how am I reading the questions. If you understand this, you will be able to implement this in the every question. Because house property mein, if you see, now I'm talking from CA's perspective. Okay, CA का perspective से मैंने बात किया, तो the question paper में इतना spaced out रहता है ना, every line is so spaced out that even though the question size is this much, it looks like this. The entire page goes in that particular question. So mentally हम लोग उधर ही अपना विकेट जाता है, अपना विकेट आधा उधर ही जाता है कि ये थोड़ी आएगा मुझे, मैं तो दिखा ही नहीं है कभी क्वेश्चन, तो ये तो मुझे आएगा ही नहीं. तो ऐसा मत करो, सब कुछ होगा. रही अरे हाउस प्रॉपर्टी में क्या पूछेगा दूसरा, जीएवी में कितना घुमाएगा, you know everything. Just that you need to be, see, don't expect similar questions in the exam. You will not get similar questions in the exam, but if you know the concepts, if you know how to solve it, then it will not take any time. I just don't want you to think in the exam. You just need to write in the exam. Don't waste your time in thinking. और ये कभी होगा when you are comfortable, you have the grip over the subject. तो grip लाओ, grip लाने के पीछे जाओ, मार्क्स झक मार के पीछे आएंगे, राइट. तो ये तेरा इलस्ट्रेशन 6 है. ओके, अभी लिखना कैसे है, ऐसे ही लिखना है, मतलब कुछ कुछ है ही नहीं इसमें. क्या लिखना है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ श्रीमती पूर्णा फॉर AY 22-23. अभी एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस यूज्ड फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन निल, उसके बाद डिडक्शन. तो मैं तुम लोग को बताऊंगा एग्जैक्टली कैसे लिखना है. तो एक बार लिखते हैं इलस्ट्रेशन 6. Sir, if we were in 22-23 FY, तो 30,000 ही मिलता था ना, because of that 5 years has elapsed after construction. बराबर, करेक्ट. कंस्ट्रक्शन को भी 5 साल कंप्लीट होता है, करेक्ट. कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी in the hands of Amit Mahajan. I will not write gross annual value, I'll directly write net annual value. And here, write interest on borrowed capital only. Don't use any other words. Interest on borrowed capital. So don't write interest on loan taken for purchase of house property. ऐसा कुछ भी मत लिखना. Interest on borrowed capital. Working note. Just write the working note and tell the examiner that I have done my formality. Just check that working note. Otherwise, ना, that answer looks incomplete if you don't write the working note for the examiner. Because उसके पास जो examiner के पास आता है ना, जो suggested answers, उसमें working note रहता है, कुछ ना कुछ. And you know, in the question paper also, on the top of it, it is written working note should be part of your answers. So that is your answer. That is not a secondary part. It is part of your answer. Right? So we will write the working note. Computation of interest. Now, don't do time pass in explaining them. How did I compute the pre-construction interest and post-construction interest? You directly write that pre-construction interest का what will be the treatment, post-construction interest का what will be the treatment. तेरे language में. Now, whatever I'm going to write, I have not decided anything. See, there is nothing here. I'm just going to write on my own, based on my understanding of the provisions. Correct? Okay. So, computation of interest on borrowed capital.
as per the provisions of the Income Acts Act 1961, amount of interest paid in the pre-construction period would be eligible for deduction in 5 equal installments. Abhi 5 equal installments will start from which year? What was the loan amount? 20 lakhs? अच्छा, directly दिया उन्होंने, sorry. So 3,60,000. ये 20 नहीं, 72,000. हाँ 72.
Did you understand how to present the answer? In your own language. I did not use any technical language. Just explain the provision, explain in the present case what is happening. That's it. ऊपर लेके जाओ. See, basically, try to write the main answer on the first page. Don't start with the working notes. Main answer first page पे रख, so that if your answer is right, examiner will be least bothered to check your working notes. If your answer is right, don't let him check your working notes. Just tell him that, see this answer, I'm perfect. Okay, and even if you're wrong, they will give you marks for steps. They have to give you marks for steps. So नहीं आ रहा तो कुछ भी नहीं करके आऊंगा, छोड़ के आऊंगा, ऐसा मत करना. कुछ ना कुछ तो करके आ, कुछ तो मिल जाएगा. नहीं मिला तो वैसे भी नहीं मिलने वाला था, बिकॉज तुम लोग छोड़ने वाले थे क्वेश्चन. करेक्ट है, हुआ सबका? ग्रेट. चलो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं. Okay, illustration 9. Prem owns a house in Madras. During the previous year 21-22, okay, Prem owns a house in Madras. During previous year 21-22, 2/3 portion of the house was self-occupied and 1/3 portion was let out for residential purposes at a rent of 8,000 per month. Now, can you guess the situation in our notes, from our notes? Situation number? कुछ लास्ट सिचुएशन था, नंबर नहीं आएगा तो भी. लास्ट सिचुएशन मैंने 50-50 करके बताया था. 50% is occupied, 50% is. So what is this? This is what? This is seventh situation. This is the last situation, seventh situation. I'll show you this once again. जिसने मैंने नोट्स यूज नहीं किया तो उनको थोड़ा सा ग्रिप आने के लिए टाइम लगेगा, बिकॉज सेवेंथ मैंने सिचुएशन जैसे रेडी की है. एक मिनट. इधर गया. हाँ, ये see this property where the portion is let out and portion is self occupied, right? Do you want to read this once कि क्या था? एक बार फटाफट रीड करना, so that question देखेंगे हम. Okay, देखते. Prem owns a house, whatever, 2/3 portion of the house was self-occupied and 1/3 portion was let out for residential purpose at a rent of 8,000 per month. Okay, don't think anything right now. Okay, we just understood that it is situation 7. Municipal value of the property is 3 lakh per annum. Fair rent is given, standard rent is given. He paid municipal taxes. ठीक है. A loan of 25 lakhs was taken by him during the year 2017 for acquiring the property. Interest on loan paid during the previous year 21-22 was 1,20,000. ठीक है. Compute Prem's income from house property for assessment year 22-23. Now, understand this is situation 7. Situation 7 में मैंने एक चीज specifically बोला था that you have to do two separate computations. You have to do two separate computations. The first one is going to be for self-occupied property and second one is going to be for let out property. Correct? Okay. Can we start writing the answer for self-occupied property at least? Because उसमें ही आने वाला है. So let's start writing. क्या लिखेंगे पहले? Computation of income from house property in the hands of Mr. Prem. For financial year 21-22. Now, how will you take a judgment कि कितना मुझे use करना है space? So we'll require some good space because we are going to do two separate computations, one for SOP, one for LOP. So leave some 3/4 page or maybe for one page directly छोड़ा तो ये problem नहीं है.
सो ये सब ना ये भी इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज एग्जाम में समझता ही नहीं, व्हेन यू सॉल्व इट फॉर द फर्स्ट टाइम समझता ही नहीं कितना छोड़ने का क्या छोड़ने का, मालूम ही नहीं, कुछ कभी किया नहीं लाइफ में, राइट? Self occupied property, NAV is nil. We will write it in the inner column. But there will be some deduction under section 24. Interest on borrowed capital. Okay, can you identify interest on borrowed capital? कितना होगा? You just text me the answer. लोन लिया था 25 lakhs, इंटरेस्ट पे किया 1,20,000. So again, the mistake which everybody can commit, which everybody, most of you have committed, you have taken the interest of 1,20,000. It will not come as 1,20,000. Why not? Because that interest is for the entire property, right? So self-occupied property का proportion कितना है? Only 2/3. Shit. ऐसे होगा. So 1,20,000 is for the entire. इसीलिए दोस्त, इसीलिए ये सब इसीलिए लिखा है. बाइफरकेट क्यों करना है? अभी इधर मैंने रेंट इंटरेस्ट का लिखा नहीं है, बट सेम थिंग विल बी एप्लीकेबल फॉर दिस. म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, डोंट टेक इट एज इट इज. एग्जैक्टली सिमिलरली interest on borrowed capital भी don't take it as it is. You have to take it proportionately, right? Okay, so here 1,20,000 for the entire property, but I was self-occupying only 2/3, and that is why 1,20,000 ka only 2/3 I will get it as a deduction in the current year. So 1,20,000 ka 2/3 comes to 80,000 rupees, right? So I will take a deduction of 80,000 here. So it will be loss from house property. Okay, now we'll have to compute point number 2, that is let out property. अभी let out property में first क्या आने वाला है? Gross annual value. You'll have to write the entire thing, gross annual value. We'll have to write a working note. Working note 1. सर Yeah. सर यहाँ पे वो अपन इंटरेस्ट में अभी वो नहीं करेंगे जैसे इसके पहले क्वेश्चन में क्या, कंस्ट्रक्शन का अलग, प्री कंस्ट्रक्शन का अलग? कुछ है नहीं ना, बट ऐसा कुछ है क्या? देख ले एप्लीकेबल होगा क्या. नहीं, एक्वायर किया ना वो. So loan was 25 lakhs was taken by him during the year 2017 for acquiring the property. So construction का as such कुछ है ही नहीं. प्री कंस्ट्रक्शन कुछ है ही नहीं, मतलब बेसिकली बिकॉज डायरेक्ट जो दिन पे अक्वायर किया वही दिन पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, ऐसे ही मान, मतलब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड ही नहीं है कुछ तेरे पास. हाँ, इसलिए नहीं कंसिडर किया. अभी मुझे जीएवी कंप्यूट करना है. जीएवी के लिए 3 चीज लगता है, सॉरी 2 चीज लगता है, एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू आइडेंटिफाई एक्सपेक्टेड रेंट. यू आइडेंटिफाई एक्सपेक्टेड रेंट ओनली, डोंट लुक एट एनीथिंग एल्स. एक्सपेक्टेड रेंट कंप्यूट करने के लिए मुझे क्या लगता है? MFS,
एम दिया है क्या, म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है, एफ दिया है क्या, दिया है, स्टैंडर्ड रेंट भी दिया है. कैन वी कंसिडर, कैन वी कैलकुलेट? श्योर. First point is M, municipal value. Can somebody tell me the value? जिनके पास है book. 3 lakh. Municipal value, right? Fair rent. Lakh 70. 2,70,000. Yeah. Higher of A and B. Then standard rent. Okay, 3 standard lakh rent is 3,30,000. 3 lakh 30. Okay, thank you. Now, will I do the computation like this? Fair municipal value, fair rent? No. Here, situation 7 आने के बाद ना एक स्टेप पीछे जाने का. सबके पहले एक बार सोचने का कि म्यूनिसिपल वैल्यू ले रहा हूँ, अच्छा ये तो पूरे प्रॉपर्टी के लिए है. सो आई एम कंसर्न अबाउट ओनली 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी बिकॉज दैट इज ओनली लेट आउट. सो फॉर एवरीथिंग आई विल डू 1/3. अभी तुझे इंडिविजुअली 1/3 करना है या एंड में जाके 1/3 करना है, यू डिसाइड. लाइक यू कंप्यूट एवरीथिंग एंड फाइनल आंसर यू कैन डू 1/3 और मे बी एवरीथिंग यू कैन डू 1/3. एनीथिंग इज ओके, नो प्रॉब्लम. सो योर इट विल बी 1 lakh. Here it will be 90,000. Whichever is higher comes to 1 lakh. Here again 3,30,000 ka 1/3 comes to 1,10,000. Here whichever is lower आएगा ना, it's the expected rent. This is 1 lakh. Then you will compare that with E के बाद क्या आता है, F, actual rent. Can you tell me what will be the actual rent? अभी actual rent ही ढूंढो सिर्फ. Actual rent, actual rent, actual rent, actual rent. हाँ, at the rent of 8,000 ना. Second line, at the rent of 8,000 per month. So 8,000 into 12 because there is nothing else कि इतना टाइम दिया है, कुछ ऐसा कुछ नहीं. 8,000 into 12. 96. I'll do 1/3. I'll do 1/3. यार ये तो actual है ना, this is my actual. Why will I do 1/3? Right? So this will be 96. Again, this can be a mistake. इतना हम लोग इमोशनल हो जाते हैं कि everything will take 1/3. तो ऐसा नहीं, तो have to थोड़ा सा logically think also. 96,000, whichever is higher. EF के बाद G. Okay, GAV is 1 lakh. Then I will take that here. Is there any municipal taxes? Is there any municipal tax? 10,000. Okay. So it is what? Municipal tax is 10% of municipal value. 10% of municipal value. Municipal value is what? 3 lakhs. Uska 10%. Can I say it is 30,000? 30,000 should come as my municipal value, municipal tax. No. 30,000 ka we will have 1/3 again, because that 3 lakh rupees which you're computing, that 3 lakh is for the entire property. So for me, for my self let out property proportion, it is only 1 lakh. So 1 lakh ka 10%, that is 10,000. This is NAV. Less deduction under section 24. Standard deduction in the rate of 30%.
30% का 1/3 नहीं, राइट? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, क्या सर? टाइम पास मत करो. बोरोड कैपिटल, interest on borrowed capital, yes. Interest on loan for the previous year was 1,20,000, but that 1,20,000 again is for the entire property. For us, it will be 1,20,000 upon 3, right? So it is going to be 40,000. $90,000 minus 67,000 comes to 23,000. That will be income from house property. But don't forget one more thing. ऊपर एक लॉस भी है, उसका इंटरहेड सेट ऑफ करेंगे. सो अल्टीमेटली लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा 80,000 का लॉस, 23,000 का प्रॉफिट, which means it will be 57,000. Everybody, इधर एक वर्किंग नोट में लिखना है तो प्रोविजन लिख सकते हैं. म्यूनिसिपल वैल्यू, टाइम मिला तो लिखना. म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन borrowed capital would be considered proportionately for LOP and SOP. ये पूरा लिखना. Okay, done? Everybody done? Illustration 9. Great. See, from every question there is something to learn. So if you have learned something new from that question, no, you have to write. I will recommend that you write that in the textbook or question bank, so that I learned this from this question, so that you'll understand while revising that particular chapter once again. Ki, this was the question, this was the point which I need to remember. So even though in the one day before the exam, if even though you're not able to read everything, just see that special point and go for the exam. It's okay. Question 2, Mr. X. Okay, can everybody switch on the videos? है ना सब लोग जिंदा? याद करो लास्ट टाइम कभी प्रैक्टिस किया था इतना? 3-4 क्वेश्चंस एक साथ. 10th standard, 12th standard. 12th, so I'm sure that you must not have practiced this much, but Mr. X, also question 2, additional questions में. Mr. X owns one residential house in Mumbai. Residential house hai. The house is having 2 identical units. Again, you can say that this can be situation 7. First unit of the house is self-occupied by X, and another unit is rented for 8,000 per month. Okay, wait. I'll instead of taking question 2, I will take first question number this. नहीं, ये भी नहीं, ये भी easy है. एक मिनट. ये 2 brothers वाला. ये पहला थोड़ा सा करते हैं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है. After that we'll go to those questions.
Question 5, two brothers Arun and Bimal are co-owners of the house property with equal share. The property was constructed during the financial year 98-99. Constructed in 98-99. The property consists of 8 identical units and is situated at Cochin. Okay. Two brothers, property situated with equal shares. Property was constructed in 1999. It consisted of 8 identical units. Matlab kya? 8 floors, you can say. Identical units matlab. Okay, again this can be situation 7. During the financial year 21-22, each co-owner occupied 1 unit for residence and balance of 6 units were let out at a rent of 12,000 per month per unit. Municipal value of the house property is 9 lakhs and municipal taxes are 20% of municipal value, which were paid during the year, and the other expenses were as follows. Repairs 40,000. What will I do with these repairs? They spent 40,000 repairs towards repairs. Ignore. सर वो Ignore. 30,000 ही मिलेगा उसका. ना अरे repairs है, लोन थोड़ी है. अरे Repairs, हाँ. लोन रिपेयर के लिए लोन लिया तो ये तो रिपेयर्स है. सो रिपेयर्स है ना, तो इसलिए कुछ नहीं करना है. रिपेयर्स, मेंटेनेंस, कुछ नहीं. यू हैव टू जस्ट इग्नोर. राइट? ओके, इट्स ओके, चलेगा रे. एकदम तू डिसअपॉइंट हो गया वेंकटेश, चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. अरे सर वो सिली मिस्टेक बहुत करता मैं. तू नहीं, वो इधर जो है जितने लोग हैं ना सब करते सिर्फ तू नहीं है इधर. यू आर नॉट अलोन ब्रो, यू आर नॉट अलोन. सो रिपेयर्स 40,000. मेरा सर एकदम ही अलग है. मैं मतलब स्कूल टाइम से ये सब करते आ रहा. मेनली तेरे में प्रॉब्लम है बेसिकली. ठीक है सर, नो प्रॉब्लम. रिपेयर्स 40,000 यू हैव टू इग्नोर. इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000. इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000. इग्नोर, इग्नोर, इग्नोर. कुछ भी होने दे, नाम कौन सा भी होने दे, इग्नोर. इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस. Construction of house 3 lakhs. We'll consider something, right? One of the let out units remained vacant for 4 months during the year. इसका मतलब, are you understanding कि we are already in situation 7. In situation 7 there are 2 properties, 2 situations. एक self occupied का situation है और दूसरा सिचुएशन है लेट आउट का. वो लेट आउट के सिचुएशन में भी उन्होंने सिचुएशन 2 ऐड किया. सो फॉर दैट वन प्रॉपर्टी जो वेकेंट है, we will have to consider कि if I don't give the property on rent, then what will be the case? If I give the property on rent for these 2 months, what will be the case? सिचुएशन कैसे करना है हम लोग सब देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, डोंट वरी. Arun could not occupy his unit for 6 months as he was transferred to Chennai. He does not own any other house. ठीक है, नो प्रॉब्लम. Arun could not occupy his unit. उसके दो, एक मिनट. अरुण और विमल, वो बिमल क्या, विमल कौन है वो? अरुण और बिमल, उनके एक एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज थे. वो जो अरुण का जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी था ना, वो 6 महीने के लिए नहीं था. ठीक है, हम लोग को क्या फर्क पड़ता है वैसे भी. वो था नहीं था, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं. सो दिस इंफॉर्मेशन कैन कंफ्यूज यू एंड कैन टेल यू कि हाँ कुछ तो सोच, पर कुछ सोचने का रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें, बिकॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वो था नहीं था, हम लोग को फर्क नहीं पड़ता. सो अरुण कुड नॉट ऑक्यूपाई हिज यूनिट फॉर 6 months एज ही वाज ट्रांसफर्ड टू चेन्नई. ठीक है, तो किधर भी गो हम लोग को क्या, ही डज नॉट ओन एनी अदर हाउस. ओके. The other income of Mr. Arun and Mr. Bimal are 2,90,000 and 1,80,000. ठीक है, respectively for the financial year 21-22. Compute the income under the head house property and total income of two brothers for the assessment year 22-23. Now, can I see here again? There will be 2 computations. No problem in this. Pakka? Okay. The first computation will be what? First computation will be for self-occupied property. हाँ, ओके. सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी करना है तो व्हाट डू यू थिंक, हाउ शुड आई स्टार्ट द क्वेश्चन, लाइक हाउ शुड आई राइट, हाउ शुड आई प्रेजेंट द आंसर? Should I do 2 separate computations of self occupied or should I have only one table and उसमें अरुण एंड बिमल करूं?
दैट विल बी बेटर नो. एक ही Yes. टेबल करूंगा, उसमें लिखूंगा NAV 0 फॉर अरुण बिमल, दोनों के लिए, क्योंकि दोनों के लिए NAV इज गोइंग टू बी 0, राइट. उसके बाद 24A का डिडक्शन इज 0 बिकॉज इट NAV इज 0. उसके बाद डिडक्शन हम लेंगे इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल. नाउ कैन यू ट्राई आंसरिंग व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर एवरी इंडिविजुअल? कितना मिलेगा? थोड़ा ट्रिकी है. 1 point that 3 lakh rupees जो है, that 3 lakh rupees is for the entire property. So first of all, we need to identify out of 8 properties, how many properties were self-occupied? 2 properties. बराबर, टोटल 8 थे. 8 में से एक एक प्रॉपर्टी दोनों ने ऑक्यूपाई किया था. ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, सो डोंट गेट डिसहार्टेंड इफ यू डिडंट आंसर दिस क्वेश्चन प्रॉपर्ली. ठीक है, नया नया प्रॉब्लम है. Out of 8 properties, 2 properties are self-occupied, which means can I say 25% are self-occupied? Okay, so can I say 3 lakhs ka 25% I will get only? Okay, 3 lakhs ka 25% if I compute, what will be the answer? 3 lakhs का 25% comes to 75,000. हम लोग ने एक चीज देखा था, 75,000 का दोनों को डिडक्शन मिलना चाहिए. देखा था ना, एक हाउस प्रॉपर्टी के एक पॉइंट में देखा था दैट बोथ ऑफ यू विल गेट द डिडक्शन. बट हियर द प्रॉपर्टी वाज कंस्ट्रक्टेड व्हेन? इन फाइनेंशियल ईयर 98-99, which means can I say the loan must have taken prior to 1499. So can I say the restriction will be 30,000 rupees for both of the individuals assessees? So here the interest on borrowed capital will be restricted to 30,000. Did you understand how did I come how did I go from 3 lakhs to 30,000? फर्स्ट स्टेप क्या था मेरा, 3 lakhs का डिडक्शन मुझे मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, बिकॉज आई एम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज ओनली 25%. सो मैं 25% निकाला, इट केम टू 75,000. ओके, 75 दोनों को मिलना चाहिए. बट नो, अगर ये लोन बाद में लिया होता ना, अगर ये लोन बाद में लिया होता ना तो मिल जाता 75. बट ये लोन कभी लिया था? 1999 के पहले, 1499 के पहले. एंड दैट इज वाई द अमाउंट गॉट रिस्ट्रिक्टेड टू 30,000. क्लियर चेक? सर दोनों को 37,500 मिलता था ना, नॉट 75. 37,500 each, हाँ, but बट इट then विल बी restricted रिस्ट्रिक्टेड टू 30. 30,000. बराबर, पक्का. ओके, सी नाउ हाउ टू प्रेजेंट द आंसर, ये इंपॉर्टेंट है. नाउ विल फर्स्ट राइट, वी नो द फॉर्मेट एंड एवरीथिंग. सो व्हाट विल वी डू? कंप्यूटेशन of, now we'll write total income because there is some other income also. So we'll not write computation of income under house property. So there's some other income also. Total income in the hands of for financial year 21-22. Particulars, rupees. First you'll write like this, self-occupied.
सॉरी, इधर रूपी नहीं, इधर बिमल अरुण आएगा. Now NAV. उसके बाद so I'll just write 25% self-occupied property के बाद में. So we'll always that we have that thing in our mind, 25%, 25%, 25%. So here it will be 30,000. Second point. Let out property. इसका we can take the entire let out property in the working note. मतलब मॉड्यूल में they have done, CA के मॉड्यूल में they have done like this कि पूरा let out property दूसरे इसमें लेके गए. वर्किंग नोट में लेके गए. सो वी कैन राइट लाइक दिस. और एक काम करते चल, इधर 75% आएगा एंड ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए विल राइट अ वर्किंग नोट. हम लोग नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे ही करते हैं. वर्किंग नोट 1. Everybody clear till here? कुछ प्रॉब्लम इधर तक? Okay, now we'll compute for let out property. Let out property, let out property, let out property. Okay. Now let out property के केस में फर्स्ट क्या आता है? फर्स्ट आता है मेरा MFS. MFS मतलब म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट. इज देयर एनीथिंग विच इज गिवन MFS में से? कुछ देख एक बार. There's only one thing which is given, municipal value. So can I say my expected rent will be municipal value? Right? Pakka? Okay. कितना? 9 lakh into 75%. Exactly. Here 9 lakhs, do not take 9 lakhs. We'll have to take 75% also because we are considering 75%. ठीक है? So इधर आएगा 9 lakhs. कितना था रहेगा? 6 नहीं कितना? बाप रे. 60 बराबर है 6,30,000. 70 नहीं 75 आना चाहिए ना. 75%. 75,000. Sorry, 75%. sorry. 75%. So 9 lakhs into 75 comes to 6,75,000. Now actual rent. Now actual rent में see थोड़ा अभी उन्होंने ये किया है देख. One of the let out properties, one of the let out units, मतलब out of how many units? One out of how many units?
6 units. 6 units. So one of the let out units, that is 1 out of 6 units, remained vacant for 4 months during the year. Okay. Arun could not occupy his. Okay, this is also okay. Now we'll just go up and we'll just see कि और कुछ उन्होंने दिया है क्या? Actual rent दिया है क्या किधर? During the financial year, each cone occupied 1 unit for residents and balance 6 units let out for a rent of 12,000 per month per unit, and municipal value of 9 lakhs is given. Do you want to try that? What will be the actual rent? आराम से ट्राई करो, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, एक बार समझने के बाद समझ जाएगा तुम लोग. I'll give you one hint. If you are trying to apply situation 2 here, do not do this independently for 1 unit, because you have to consider let out property as a whole. एक ही property है, ऐसे consider करो, and then you compare the expected rent and actual rent. But basically इधर हम लोग जो कर रहे हैं ना actual rent, you first compute the actual rent. You first compute the actual rent, you will get the figure, and then you compare that figure with 6,75,000. मतलब एक property का compare नहीं करना हम लोग को. So basically situation 2 दिख रहा है कि apply हो सकता है, but we should not use situation 2 here because this is a different question, and that's why we are not using, or there is a different method of solving, and that's why we will not apply situation 2 here. We'll compute the actual rent properly, and after that we will compare that entire actual rent with 6,75,000. So how will we compute the actual rent? In the 12,000 था ना per month. So can I say 12,000 per month into 5 properties into 12, और उल्टा थोड़ा सा उल्टा लिखता हूँ, 12,000 per month was the rent, that's why into 12 किया तो per year मिला, and ऐसे 5 properties थे. Why is not 6? Because जो 6th property था it was vacant for 4 months, so that's why I did this first, 12,000 into 12 into 5, and नीचे और एक computation करूंगा, 12,000 into, can I say 8 into 1? Because for one property which was let out was vacant for 4 months, so which means one property was not let out for 12 months, it was let out only for 8 months. So I did the separate computation for that. So 12,000 into 8, ऐसे कितने properties थे? There was only one property. So if I just add this, 12,000 into 12 into 5, this gives me 7, like 20,000. 12,000 into 96,000. This is my actual rent, and now I will compare this actual rent with expected rent, which is higher. So can I say my GAV is 8,16,000? Now the question is very simple. अभी कुछ है नहीं. अभी एक क्वेश्चन आता है कि ये क्या करूं मैं अरुण और बिमल में, मतलब
ये तो मुझे समझा, GAV आया 8,16,000. How should I bifurcate? So in the end, we can apportion half of. Okay, at the end we can apportion half. Okay, that this is one strategy. Another strategy can be, first of all, apportion करना है क्या कर रहे हो सर आप? See, ऊपर ही देखो, two brothers Arun and Bimal are co-owners of the house property with 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 equal share. So whatever income they will generate, 50-50 will be distributed. Now, if we have earned this much amount, 8,16,000, what we'll have to do? 50-50 bifurcate करना पड़ेगा. Okay, 50-50 bifurcate करके इधर 50% आएगा, इधर 50% आएगा. माइनस म्यूनिसिपल टैक्स करना पड़ेगा, इधर 50, इधर 50. वापस मुझे एक आंसर आएगा NAV, इधर 50, इधर 50. उसके बाद 30% लगाऊंगा, 30%. और उसके बाद माइनस करूंगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इधर 50-50. ये इतना सारा टाइम पास करने से अच्छा वी विल डू वन कंप्यूटेशन एंड वी विल टेक इट हियर. ये मैंने क्यों नहीं पहले किया? बिकॉज तुम लोग को समझता ही नहीं कि क्या प्रॉब्लम होता. अंडरस्टूड? इफ वी फॉलो आवर नॉर्मल मेथड, then we'll have to do these many things, but which will waste a lot of time, and that's why we will not do these things. We'll compute here, we'll compute GAV. After that, we'll properly make one table. Now, can I say you have realized that you have to do the entire computation here, and from this answer we have to just bifurcate, correct? So just make one small table here. Arun, sorry, rupees. बराबर. Now GAV is equal to 8,16,000. Okay, इनर कॉलम में लिखते हैं. मैं इसके बाद और एक क्वेश्चन लूंगा दोस्त. GAV is 8,16,000. उसके बाद म्यूनिसिपल taxes. What will be the municipal taxes? 20% of municipal value. What was the municipal value? Municipal value was कितना था? 9 lakh rupees. बराबर. So 9 lakhs pay 20%, but that is for the entire property. We'll have to consider for let out. Let out was 75%. Correct? So 9 lakhs pay 20% into 75%. Everybody with me? So NAV is going to be 681 into 10%. एक मिनट. ये 135 बराबर है. एक मैं 75% किया कि नहीं मुझे याद नहीं है. किया था ना 75%. Okay. Okay. Can you help me with interest on borrowed capital? It is 3 lakhs. Okay, can you try this? तो 2,25,000 पूरा मिलेगा ना लेट आउट?
Correct. So right now we are doing one computation only. So I will get 2,25,000 entirely. How 2,25,000? 3 lakh rupees. But 3 lakh rupees is for the entire property. We have to consider this for let out. Let out matlab 75% किया. हाँ 75% किया. I will get the amount of 2,25,000. Right. So I will consider everything here. Perfect. Now 225 plus 204 300. 429 300. Minus 681,000. Are we missing anything? 251 700. पक्का ऊपर सिर्फ हाँ अभी ये जो 251 700 है नाउ नीचे विल राइट शेयर ऑफ अरुण 50% sorry and share of Bimal 125 850. Can I take this in our main computation? If you remember हम लोग वर्किंग नोट कर रहे हैं इधर ही छोड़ के मत आना मेन कंप्यूटेशन तो खाली रहेगा सो 125 850 सर या सर वो लॉस नहीं होगा क्या? हाँ तो Set है off. ना वही बोल रहा हूँ दिस वाज आवर कंप्यूटेशन ये ना वर्किंग नोट था विल टेक दिस आंसर विद आवर मेन कंप्यूटेशन एंड देन विल सेट ऑफ अच्छा वर्किंग नोट में नहीं लिखना है. वर्किंग नोट क्या लिखे ना वर्किंग नोट में हम लोग सिर्फ लेट आउट प्रॉपर्टी का कंप्यूटेशन कर रहे थे सो इधर जो हम लोग ने गलती किया पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू का ये रेड पेन से कैंसिल करना जो दिखे so that whenever you'll read you'll understand मुझे ऐसे नहीं करना था 1,25,850 1,25,850 so that will be income from house property 95,850 when an examiner opens the paper and checks this your first answer मतलब उसको ये दिखना चाहिए if he sees this I'm telling you he'll not even bother to check their working notes because he knows कि अगर working note गलत होगा तो ये भी गलत रहेगा and that's why you should not write with working notes start with working notes you should always start with main question everybody done पक्का okay okay सर अदर इनकम भी ऐड कर देंगे ना इसमें oh yeah yes income from house property में other income add करना पड़ेगा right we forgot that yes sorry other income कितना था 2,90,000 and 1,80,000 Sir, if income from house property का total had a loss in this one, then set off के provisions use करने like can you set off your loss from house property against other income yes to the extent of 2 lakhs okay. because inter head में there is a restriction ना
हाउस प्रॉपर्टी के लिए. just करो ना ऐड कितना था 2 लाख 3 lakhs. So this will be what? Gross total income. Cool. Everybody done? Can we solve one small question? Yes. Okay. I hope you are understanding everything. अब तक जितने questions किए, chapter revision किया. Okay. Good. मस्त question है. There is one question, May 21 RTP. Mr. Rocks, a citizen of country Y, is RNOR in India during financial year 21-22. He owns 2 house properties in country Y. One is used as his residence. Another house property is rented for a monthly rent of $18,000. Fair rent of house property is $20,000. Value of $1 may be taken as 78. He took ownership and possession of a flat in Delhi. ये ऊपर के क्या थे? ये अलग country Y के property से दो उसके पास. नीचे he took ownership and possession of a flat in Delhi on 1/10/2021. Okay. Which is used for self-occupation while he is in India. The flat was used by him for 3 months at the time when he visited India during previous year 21-22. Municipal valuation is 4,58,000 per annum. Fair rent is this. He paid property tax of 13,800 and 2,800 as sewerage tax to Municipal Corporation of Delhi. He had taken a loan of 18 lakhs at 9.5% from HDFC Bank on 1st August 2019 for purchasing this flat. No amount is repaid by him until 31/3/2022. Matlab, you will get a feeling that you will not get the deduction. No amount was repaid. But as I told you, that interest, you will get a deduction on accrual basis, even though you don't make a payment, but still you will get a deduction. So this was the point which I was talking about, where when I was explaining the concept. They will give you such a situation that you will get confused and you will not consider that. Okay, okay. He also had one house property in Bangalore, which is let out on a monthly rent of 40,000, fair rent of which is 4,58,000 per annum. Municipal value 3,58,000, standard rent 4,20,000. He had taken a loan of 25 lakhs. Basically, there are 2 loans. One loan for other house property, one loan for Bangalore house property, one for Delhi, one for Bangalore, from one of his friends residing in country Y for this purpose. And municipal tax is 5,400 is paid by him in respect of this house during previous year 21-22. Compute the income chargeable from house property of Mr. Rocks for AY 22-23. I am also tired by reading the questions. That's a big question. Now there are 4 properties with us. First, we'll tackle the outside India properties. Okay. Can you tell me what will be the taxable amount for outside India properties? Just try. भारी क्वेश्चन है, भारी एकदम जबरदस्त. Don't think about Indian properties.
Aniket's answer is right. Wow, कितना जल्दी तूने solve किया सब. Read each and every point very carefully. Identify why that point is given. टाइम पास कर रहा है हमारे साथ. क्यों? He is RNOR. In case of RNOR, Indian income is always taxable, but foreign income is taxable only when he's falling under two situations. Point number one, he has a business outside India which is getting controlled from India. Second, he has a profession which is set up in India. This income is for rental income, which means this is a foreign income, but this foreign income is not falling under those exceptions. And that's why this foreign income will not be taxed in India. तो देख रहा है उनके पास कितना टाइम है लाइफ में, सब ड्राफ्ट करके सब उन्होंने इतना टाइम स्पेंड करने के बाद they can get the fail results like this. They give such good information, कितना मस्त लिखा है सब कुछ कि रेंटेड अमाउंट इतना है, फेयर रेंट इतना है, कि तुझे कन्वर्जन के लिए भी उन्होंने रेट दिया है 78 का. सो यू विल कन्वर्ट समथिंग एंड डू समथिंग इन द पेपर कि अरे सर ने बोला है कुछ तो करके आओ, नहीं समझा तो यू विल डू समथिंग ओनली दिस मच एंड कम. तो बिकॉज ऑफ दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाई दे हैव गिवन आर एन ओ आर देखने की बात है, ऐसे बत्ती जलना चाहिए कि RNOR only, which means that it only Indian income will be taxable and foreign incomes with those specific foreign incomes. Okay, तो ये टाइम पास हम लोग अभी बाजू में रखते हैं. Directly we'll jump on this. He took ownership and possession of a flat in Delhi on 1/10/2021, which is used for self-occupation while he's in India. ठीक है, the flat was used by him for 3 months at the time when he visited India during previous year 21-22. Municipal value दिया है, fair rent दिया है, प्रॉपर्टी टैक्स दिया है, सीवरेज टैक्स दिया है एंड नीचे लोन दिया है. अंडरस्टैंड. अभी और एक चीज ना तुम लोग को मालूम नहीं होगा, ये अभी तुम लोग ने अगर सॉल्व किया होगा क्वेश्चन तो मालूम होगा. दे हैव गिवन दिस पॉइंट, ही टुक ओनरशिप एंड पोजेशन ऑफ द फ्लैट ऑन 1/10/2021. सी नीचे दिखना, ही टुक अ लोन ऑफ 18 lakhs, 9.5, everything is given, but they never mentioned what is the date of completion of construction. They have not mentioned the date of completion of construction. देख ले मिलता है क्या क्वेश्चन में किधर. So here it is a valid assumption that when I got the possession at that point of time construction got completed. ये किधर भी लिखा नहीं है, किधर भी लिखा नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चंस मैंने 3-4 क्वेश्चंस देखे. ऊपर भी एक क्वेश्चन है जो मैंने छोड़ा ना, उसमें भी ऐसा एक पॉइंट है. So I got the ownership, I got the possession on 1/10/2020. Assume that the construction got completed on 1/10/2021. Now everything will be makhan, everything will be smooth now. First of all, if it is a self-occupied property, can you tell me what will be the expected rent and GAV and everything? सब दिया है, municipal valuation.
What should I write? Because it is self-occupied. वो कितना दिन है, कितना दिन नहीं है, does not matter. What is the municipal value? Does not matter. What is the fair rent? Does not matter. What is the tax which he has paid? Does not matter because my NAV is zero. Right? The question is such a big question, but the answer is only this much. So my for Delhi property, my NAV is zero. There is no 24A deduction. There will be only one deduction of 24B, and for that we'll have to identify what will be that deduction. First of all, what is the date of completion of construction? Completion of construction is 1/10/2021. Again, whenever you have any doubt, please draw the क्या अपना timeline. Timeline है क्या बोलते हैं उसको? हाँ, timeline. So timeline identify कर और देख कि if I'm standing on 1/10/2021, if I look back, which is the 31st March, which I can see, 31st March 2021. So interest paid prior to 31st March 2021 will be considered as pre-construction interest or pre-construction period, or 1/4/2021 के बाद post-construction period. After identifying the timeline, can you tell me what can be the interest which he can take as a deduction? थोड़ा ट्राई कर, गलत गया तो चलेगा, प्रॉब्लम नहीं. सिंप्लीफाई कर थोड़ा डेटा कि what is the pre-construction period, starting from which date, ending on which date. So once you identify the period, it will be easy for you to identify the interest. Easier है. One. Okay.
बाकी लोग बाप रे, इतने अलग अलग आंसर्स सबके। Okay. Answer is 2 lakhs. Because something will be restricted to 2 lakhs. Now the question is कि कैसे 2 lakh ओरिजिनल आंसर क्या है? ओरिजिनल आंसर क्या है which got restricted to 2 lakhs? Interest for the current year is 1,71,000. करंट ईयर है, करंट ईयर का इंटरेस्ट पोस्ट कंस्ट्रक्शन। नाउ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट हम लोग को कंप्यूट करना है। प्री कंस्ट्रक्शन में देयर आर 2 years, 1 year is for 8 months and the second year is for 12 months. सो प्री कंस्ट्रक्शन का अक्यूमुलेट करूंगा, अक्यूमुलेट करने के प्री कंस्ट्रक्शन मिलेगा, प्री कंस्ट्रक्शन का 1/5 करूंगा, आई विल गेट द फिगर ऑफ 1/5 ना 57,000. Everybody. See, they'll not give you the answer of interest. So of course they'll ask you to find the answer of interest. We know that what is to be done with interest, but we'll have to first. But ये तो 11th standard है रे. How to compute interest? Right? This is not tax. This is normal computation. So don't make mistakes in this. They want to see that whether you're making mistakes in tax or no. Now you are not making mistakes in tax. You are making mistakes in computations. Should be the last thing. कैसे किया? एक क्या समझ नहीं रहा क्या लिखा है उन्होंने? बोलता हूँ मैं, रुको। क्या है देख, किधर गया? हाँ, लोन लिया कभी था? लोन लिया था 1 August 2019. सो विच इज दैट फाइनेंशियल ईयर? 2019 से ओके। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड समझा पहले तुम लोग को? 1 August 2019 टिल 31 March 2021. ओके, तो पीरियड आइडेंटिफाई हुआ। पीरियड आइडेंटिफाई होने के बाद कितने फाइनेंशियल ईयर से बीच में? फाइनेंशियल ईयर 1920, फाइनेंशियल ईयर 2021, 2 financial years. Now in these 2 financial years 1920 में there are 8 months, no, because I took the loan on 1 August, so interest will also start from 1 August, and financial year 2021 में there are 12 months. तो normal computation करो, 18 lakhs into 9.5% into 8 months, 8 by 10, 8 by 12, sorry. So 18 lakhs into 9.95% into 8 upon 12. I will get the answer of 1,14,000. बराबर है कंप्यूटेशन? बराबर। उसके बाद 12 मंथ्स का कंप्यूट करना है मुझे। सो 18 lakhs into 9.5 into 12 by 12 because this is for the entire year. So I will get the figure of 1,71,000. If I add this, I will get the figure of 2,85,000. But this is what? This is pre-construction interest. Now I will get 1/5. So I will do 1/5. So 285 upon 1/5 will give me 57,000. So 57,000 I will get it from the first year
from the first year of construction. First year in which the construction is completed. So construction complete कभी हुआ हम लोग ने assume किया 1/10/2021. So basically financial year 21-22 में I will get 57,000 of what? Pre-construction interest. Post construction क्या होगा? Same ना 18 lakhs into 9.5%. Comes to 18 lakhs. 1,71,000. If I add 1,71,000 to 57,000, I will get the figure of 2,28,000. This is the total interest, but since this is a self-occupied property and which assuming nahi for purchasing the flat liya na loan unhone, so that will be what it will be restricted to 2 lakh rupees, and that is why the answer will be 2 lakh rupees. See, there is nothing difficult. क्या difficult था उसमें? कुछ नहीं था difficult, right? Everybody got this answer? पक्का? Sure है? 228 का 2 lakhs कैसे किया? Okay. Now he also had a house property in Bangalore which is let out on a monthly rent of 40,000. Now this is let out. Fair rent is given, municipal value is given, standard rent is given. He had taken a loan of 25 lakhs at the rate of 10% from one of his friends. ठीक है. So basically हम लोग को GAV मिलेगा because we have actual rent, we have expected rent, we can compute expected rent. So we will get GAV. GAV से minus क्या करूँगा मैं? Municipal tax. Is there any municipal tax which is given here? नहीं है, right? नहीं है. So no municipal tax. I will get net annual value. So net annual value से reduce करूँगा 30%, reduce करूँगा interest on borrowed capital. Interest on borrowed capital कितना आएगा? Interest on borrowed municipal capital. tax है इधर है. 5,400. हाँ यार, end में लिखा है municipal tax of 5,400. Right. Sorry. Right. So 5,400 I will reduce it from GAV. I will get net annual value. उससे दो reductions करूँगा. 24A 30%, 24B interest on borrowed capital. Again, interest on borrowed capital कैसे compute करूँगा? Simple है ये. He also had लिखा है. So there is no pre-construction, post-construction. Because see, when do we understand whether they are expecting to compute pre-construction, post-construction? They will give you specifically that this is the time, this is the date on which he took a loan, this is the period of construction. ऐसे कुछ ना कुछ तो hint देंगे so that understand कि तुम लोग को निकालने का है pre-construction and post-construction. Here it is not given, so सीधा क्या होगा? 25 lakhs into 10%. Yes, sir. So it will be 2,50,000. Okay. How much will I get it as deduction? Entire 2,50,000. let out है. Entire 2,50,000 and do not restrict to 2 lakh. I'm sure ऐसा एक तो कोई तो होगा उसने 2 lakh बोला होगा मन में. So it is not 2 lakh, it is 2,50,000. वेंकटेश तो definitely होगा, उसने 2 lakh restrict किया होगा. I'm very sure about it. वेंकटेश किया था ना 2 lakhs? हाँ सर 2 लाख मालूम है, चेहरे से समझता है. So it will, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा हो कि कितना होगा. So it will be 2,50,000 and not 2 lakhs. So this is a very common mistake जो सब लोग करते हैं. Something is fixed कि हाँ 2 लाख की इंटरेस्ट होना चाहिए, बट वो पहले देखो सेल्फ ऑक्यूपाइड है कि नहीं है. नहीं है सेल्फ ऑक्यूपाइड तो मैं पूरा ले सकता हूँ. राइट? ओके. लोन फ्रॉम फ्रेंड इज आल्सो अलाउड ना? ऐसा कुछ नहीं ना बैंक ही होना चाहिए. हाँ अलाउड ऐसे कुछ उसका प्रॉब्लम नहीं है. लोन लिया तो लोन, इट इज लाइक अ लोन. Okay. Now, do you want to try this at home solving? And I will share the solution with you tonight. मैं आज रात को लिखता हूँ solution, उसके बाद I will share. But I want you to try this. एक बार try करो. मैं solution से एक बार compare करो. And solution से अगर match हो रहा है तो perfect. अगर जो भी कुछ add करना होगा, you can add it after that. Perfect चलेगा? Sure. So we are not done yet with house property because I want to solve some sums of house property. Of course we are running behind the time. मतलब for example अभी मैंने आइडिया थोड़ा देना रहेगा तो 3 to 4 questions, अभी 3 questions तो मुझे करने हैं हाउस प्रॉपर्टी के. तो it was my target to complete house property today so that we will be able to complete the batch on time. But 3 questions है तो now you tell me that
क्या करूं, मतलब शुड आई कंटिन्यू विथ हाउस, नॉट टुडे, शुड आई कंटिन्यू डूइंग, so 1-2 दिन आगे जाएगा तो चलेगा, नहीं चलेगा, इफ यूर ओके देन चलेगा ना, सबको चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है, बट विल डू इट प्रॉपरली, दैट्स व्हाई आई वांट टू डू, प्रॉपरली सब कुछ करेंगे, जो भी कुछ करेंगे परफेक्ट, सही है। सो योर कंसेंट इज इंपॉर्टेंट, नहीं तो यू विल से यार सर लिखने के लिए 12 दिन लिखा, बट लोग लिया 25-30 दिन, 25-30 तो डेफिनेटली नहीं होगा, बट जितना अच्छे से हो सकता है उतना अच्छे से मैं कवर करूंगा। I hope I'm doing justice to the subject. Sure? Great. Chalo. Then we will stop here. What did we do in today's session? In today's session, we completed the revision of house property in detail. Along with that, we did a lot of questions on house property. House property ke questions mein, I'm taking the types of the questions. Abhi 3 to 4 types of questions are remaining, so we will cover in the next lecture, that is tomorrow. Perfect. Okay. Now I'm staying here for doubts. If you have any kind of doubt, please ask me. So next topic which I'm going to start, that is capital gains. So capital gain ka properly revision karenge, and then we will start with the questions of capital gains. Right? Okay. So I'm staying here for doubts. If you have any doubts, please ask me. If you don't have any doubts, you can leave the meeting. Thank you very much, and I will see you tomorrow. So when are you going to discuss the